Oh, sorry, grab a seat anywhere. We'll just 2 minutes into it. Decided to go live stream, so hi. Choose copy. All right, Instagram is good. YouTube is good. लेकिन सर मैं तो ना उस ग्रुप पे भेजा है लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है हाँ क्या हाँ अगर उन्होंने नहीं आ सके ना तो उन्होंने लिंक भेज दो लाइव हुण इत्थों लाइव पे जा रहे हैं हाँ क्योंकि वो अगर नहीं आ सकते थे हाँ क्योंकि इस बारी मैं क्या यार लाइव भी चल हाँ जी लाइव पे जा रहे हैं और ये चेक कर ले हाँ जी बिल्कुल मैं स्टडी करता रहा ना हाँ एक मार्केट बाय हाँ चल दिया सपोज नास्डैक दी गल है हाँ स्पीड दोनों ही सेम है ठीक है मैं जो ऑब्जर्व किया है इट्स इजी टू सेल देन बाय सर हमेशा ही तो कहने Comparatively. हाँ क्योंकि मार्केट क्योंकि पैनिक सेलिंग हो शुरू हो जाती है हर बंदा कहता है सेल इतना सौखा ਤੇ ਉਠਣਾ ਔਖਾ ਇਹ है बिल्कुल 100% सेम क्योंकि ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬ ਦਿੰਦੇ this is better ਯੈਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੈਟਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ हाँ जी ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਮਤਲਬ कंपैरेटिवली 100% सर देखो जो एक्सपेक्टेड हाई तो सेल करना ज्यादा आसान है right guys you'll be all included part of what he's saying no problem anybody has zero knowledge never has traded before okay most of you no problem so I'll build my presentation accordingly no problem just gonna do an audio check with my group here working good that's good so I'll post this on my status and let me just adjust the camera slightly so sorry good enough what are those just gonna all right link forward status all right that's going let's go and slideshow Telegram TikTok. Maybe even make. All right, guys. Let me close the door. All right, I'm going to start now. Okay, no problem. Anywhere. It's okay. Good afternoon, everybody. Thank you for coming in. Today is Saturday, November 15, 2025. My name is Mr. Rafe.
And I'll take a different marker. The number you can reach me if you have questions after is 647-228-0694. And of course, the website is SuperAreas.com. Right, so I'll be presenting you. This number is read by 4 people. This is a WhatsApp number. If you have a question after, somebody can read and reply. And if it's for me, I'll reply, depending on. So I'll get my presentation started. Every other Saturday, we do these presentations to introduce you to a business about online trading. What is it, how it works, and everything. So expect to sit here for the next few hours and make sure you have brought lots of questions to ask. So the more questions you have, the better it is the presentation for me, right? So before I begin every Saturday, I like to say this quotation. They say sky's the limit for ambition. We say sky's the only beginning. Why? Because the amount of money that moves in online trading, nobody can easily comprehend. Meaning that, okay, you think you can make $1,000 a day, $200 a day, $5,000 a day, $100,000 a day. There's no upper limit to it. You can make whatever. So it's not, it should keep you humble, keep you grounded. So there's no upper side to it. So you have to, this is just not the beginning. It's a universe that I will explain you how it all works. So before I begin, some things legally I have to read out. Some disclaimers. I know they're hard to read, like a cell phone plans. You're signing up. SuperAreas.com. Click on it. Everything is there. Hard to see it here. Comes down to 3 things. We are not financial advisors. We are not a broker. We're not an investment firm. We are not a group. We don't take your money, invest it somewhere. We don't control your money. We will never ask you for money. We will never have access to your bank account. We will never have access to your broker account. So we are not a money management group, investment group. Everything we provide is for learning, educational, informational, entertainment purposes only. You will see the entertainment purpose as well while we're trading. You are responsible for your own profits and loss. So the whole summarization is this. End of the day, our company is a software consulting company. We write software that helps you do lots of things. I've written software for hundreds of, so lots of different software we have written. So that we have to be clear that, hey, it's not like you're going to give me some money, 1,000, 2,000, 5,000, 100,000. We're going to give you a return. We're never going to say, buy Tesla, buy this, buy that, nothing like that. And then you're going to say, why am I here then? So don't worry. I'll lead you into this presentation. And everybody understands Hindi, Urdu, Punjabi. There's somebody who's doesn't understand, so say it now, because then I will stick it to the whole English. Of course, English not my first language, but presentation structure. So we start around 1 o'clock. By 3, we'll take a break. I will lead you for the next 90 minutes or so in very absolutely basics. It's a free seminar, no cost, no obligation, nothing like that. You may learn lots of cool things about this industry. 3 o'clock, we'll take a break. Coffee, tea will be coming. You can have it, some Timbits, some sugar rush too, because then we'll start getting into a little bit of advanced topics of where the money is, how to use this industry, how to make it, how much money you can make. So first, I'll build you with basics, because I don't know, most of you I'm seeing for the first time. Maybe you came in with a referral, maybe you came in from a friend. So I'll build as basic and as slow as possible. Some of you may know already some of these things, but don't worry. I'll make sure everybody's with me. Event today is broadcasted on our social media. So it is going live on, I believe, Telegram or YouTube. So cameras are facing with me. Audio, if you ask, may get picked up. None of you guys are being broadcasted. It's just this board. If you choose to come in front of the camera, you're going live. We'll do mostly question answer sessions too. Don't worry. The longest I've done this presentation is 9.5 hours.
So I will not get tired until you have the last question. Hey, and I want to make sure you go home completely satisfied with all the answers I have. I don't like to say if you have to take a call, just step outside, because then sometime I'm running a paragraph in my mind, and it's kind of audio video. You don't have to record anything. It is all available on my channel anyway. So this is whatever I'm saying is all being recorded. So you don't have to wait. Grab a seat anywhere. So all of this is going online and is being recorded, and all my past presentations do get recorded anyway, so you don't have to waste your own data or space to. All right, a little bit about us. I wrote 45.99 years in the making. Why? In 2 days, I will turn 46. So that's how it says. November 19 is my birthday, so I will be 46. So that's why I keep increasing it like a. My mind is a kind of an engineer, so I kind of look at everything as a systems, data, algorithms. So that's why even the age is just a number. So a little bit about me. This is November 6th, year 2000. 20 years ago. So we are in 2025. So 25 years ago, right? This is Spoke Magazine, Conestoga College, Kitchener. 1 hour west from here. Now it's actually they do issue degrees. This is where I grew up. I went to Cameron Heights Collegiate Institute in Kitchener. I came to Canada with my parents in 1996, graduated, and in year 2000, I was lucky enough to represent Canada with the right mentors in writing software. So I did competitions. So I've been writing software for at least 3 decades. So this is not something I just came up with writing software. So I've been doing this for a long time. So 46 minus 25. So I have a lot of understanding how systems work, algorithms work. One of the worst software on your phone today, right now, is TikTok. The worst software that you can imagine in your phone. So any app that you download, it is free. You are being monitored. It listens to you, it talks to you, it will try to take as much data out of you. So TikTok, it looks harmless. You're just doing scrolling, cat videos, mouse videos, cricket videos, boxing videos, cooking videos. But amount of information they suck out of you, only the engineers or software developers know. Google Maps takes all your information. Instagram takes all your YouTube. So any app that's free, given to you for free, it's taking and sucking up all the information. So being an IT background, it kind of helps me understand. And these days, I write software for trading. And my background has been writing software. You guys have an IPTV box at home. You're paying somebody $10 a month, $20 a month, $30 a month, or for a year, and you're scrolling through a lot of non-licensed content, paying somebody movies and things. How that all works, how the channels get broadcasted, downloaded, uploaded. I've written all sorts of software for all sorts of companies, databases, systems design. So lately, for the last 5 years, I'm involved in writing software for trading. It's a career that I chose, and I got hired by this company. So started 2003 as an entrepreneur, started my first fixing computers, doing mod chips. So I've been involved for the last 3 decades in a variety of things. So the reason to say these accomplishments, or you can say, is just so you build a bit of a trust that, hey, the guy's not doing this yesterday. I've been doing this. So I wrote a lot of mod chip softwares, a lot of satellite. When you watch a satellite system, how the signals come down from the satellites, and I understand the core programming language for that. So in the last 30 years, I've done various types of ventures. Glenn McGraw came, he opened our Fat Sportsplex. So entrepreneur mind, hey, trying to do a bit of a business, different varieties. I imported rice, Fat Sportsplex. We have a plaza in Ajman, UAE, 21 apartments, 7 shops. So different variety of businesses I'm involved in, and I take care of it. Imported, did a clothing brand with somebody,
temp agency. So a little bit of business in I understand, and now I strictly focus 100% of my time in writing software for day trading, online trading. So 20 years of experience, different technologies. If you have a satellite switch, how these dissect switches works, writing satellite receivers, doing mod chips, how the programming of majority of hardware and software works. I understand how you use trading. Everything is kind. If you use an IPTV box, how that works. Lots of different ways to do it. So who we are, this is me and my team. I am not, this organization is not a one-man show. You have to clearly understand this company has been around since 2008. You have heard them probably on your radio. Company is called Win Lifetime, run by Mr. Daniel. So the company is Win Lifetime. It has different branches, and this is one of them. So it's so since 2008, they have 12,000 global members. This company has. They have two offices, this one right now in Canada, and we had three, but we're moving to Brampton, better location. So we have 4 data analysts in our team. I'm one of them, junior analyst. We have 13 mentors. We have a staff of 30 people, and we do this weekly. So we write software for trading. This company has been doing it for the last at least 20 years. I joined this company 5 years ago. I got hired as a software developer with my experience, and now I just improve their software and I teach them how to get into trading. And we cover markets and everything. So a little bit of background. So it's not a one person. If I'm not, I just do a presentation here on Saturday and Monday to Friday. I have my job. I do market analysis. I do gold, I do NASDAQ, I do crude oil, I do analysis of the market. I don't control the market. I just talk about it like a commentary, right? So why are you here? Most people are here either to check us out. What are these? We do radio ads, we do social media ads, we do print ads, we do podcasts. So people are excited about, hey, I want to learn about trading. So why not learn from somebody who does it professionally? So your objective may be one of the two. Either you want to find out more about this industry, or you're strapped for some cash and you're looking to see, hey, what else can I do? So either it's a curiosity or you are here to actually find out about our company. I'll explain. We teach you lots of things. Anybody can learn. You don't have to have a background in trading. You don't have to have, if we have a saying at our office, you have a pulse, we can teach you, literally. As long as you are age of 18, because there are some regulations, you have an active pulse, all of you have it, you're sitting here, living, breathing, so you can learn. It's not a rocket science. It's not, I didn't know futures trading 5 years ago. I've been trading for 20 years. Yes, I understand. But these days, with the help of software, with the help of algorithms, with the help of everything, learning to trade has become very simple, very easy. So I know a lot of people say, well, trading looks complicated. It can be if you go to a bank and they will start they say, okay, let's assume you have $5,000 in your bank account and you decide, okay, what can I do for this $5,000? Because everybody wants to get into a bit of a trading. You go to a bank or a financial advisor, they're going to start to explain a lot of jargon, and you're going to say, my God, I don't understand any of it. It is too complicated. I don't want to do it. It's not my field. I rather be in logistics, or in restaurants, or in real estate, or whatever I'm doing fine because this looks complicated. So they will bring you a bunch of papers giving you some numbers and jargon. And then an average person says, no, not gonna do it. It's too complicated. I don't have the expertise. I don't want to lose my hard-earned $5,000. So then you back off and then you say,
But then you see a lot of people who are trading, and then you're like, what are they doing? What exactly is it that they do? And they have a lifestyle. And you ask them, they have 2 or 3 monitors and charts are running, and they try to overcomplicate things. Why? And it's not. It's just that's the way the industry is, to make it talk too much technical. So my job when I was brought in to help this technical stuff to understand somebody, I can pick a person who has never, ever, ever traded, and I can make you a trader. Never, ever. Like, you can bring me a 75-year-old person, which we have. You can bring me an 18-year-old, my son involved, never traded. So my job was to, as a systems design, was something that, hey, we have a great software. We built it since 2008, and I'll show you the software. But we want to bring people, and then you will say, all right, okay, what's the reason? If you have a great software, I'll explain the next thing. Because the biggest question, the burning question all of you have, which I understand, is if you're doing so great in trading, you okay, करते रहे यार, हमारी क्या जरूरत है, हमें क्यों खींच के इधर लेके आए, हमारा सैटरडे क्यों खराब कर रहे हैं? You understand language, right? Okay, good, ठीक है, क्योंकि कई दफा वो बैठे होते हैं तो मुझे so one of the biggest questions I will answer is, why do you need, keep doing what you're doing, man. You're fine. You're a good trader. You drive a decent car. You have a good organization. It's okay. Keep doing. You don't need to share it, right? That's the first question. Says, यार सानू क्यों दस रहे हो? ठीक है, करी जाओ. अगर बहुत अच्छे ट्रेडर हो, तो सेमिनार क्यों कर रहे हो? सानू क्यों बुला रहे हो? So I have to make sure I answer questions from your mind, because you have to, that's how an engineer needs to think. Before I go, who should not trade? I'm going to go in reverse. If you are a person, I have no idea who you are, how you are, what do you do, anything. Most of you, again, I'm seeing for the first time. If you are emotional, please don't trade. This is not going to work out for you, because 100 people will join, 97 will fail. This is scary statistics. I stand here, I do this for a living. I teach people. This is a very stupid stats. I'm standing here asking you, you should get into trading. It's a great money maker. But on the same time, I'm telling you, 97% of the users will fail in this industry. 4 big problems they have. They don't have discipline, number 1. Number 2, they fear. So it has everything to do with human emotions. It has nothing to do with technicals, nothing to do with charts, nothing to do with numbers, markets. If you are a person who is grounded, who doesn't get emotional very quickly, who doesn't get excited very quickly, who doesn't lose its temper, you'll do fine. It requires one discipline only in life, is your emotional control. And I write this because 97% population doesn't have this. And you will one day, you will join. So I always begin, before you go home, you say, all right, should I do this? Should I don't? Just evaluate yourself and say, okay, if I think I can do this, right? And statistically, females tend to do better. They're more grounded. That's our stats. There's no fact. Men tend to be very aggressive. The younger you are, the more aggressive you'll go. The older you are, you kind of take things a little bit more logically. Okay, let's do it this way. Because you have to understand, my system, of this company's system, it'll do everything for you. You just have to sit and wait. And a lot of impatient people, they will jump in too quickly, they'll jump out too quickly. So this business demands one thing and one thing only. You must be able to have a great discipline.
Discipline what? Making sure you're not rushing things. Calculate, observe, wait. So you will get paid to wait. That's our motto altogether. So let's first begin with what is trading. All of you guys are traders inherently. Every single day you trade something. You go to grocery store, you give them money, they give you product, you're trading. You buy a car, you're trading. You buy a commodity, you're trading. If you're selling a service, you're an accountant, you're selling a service. So you're giving a service. So all of us are by definition a trader, one way or another. So either you're giving or you're getting something. So that's out of the way, right? So I'm going to go very, very basic to understand what trading is. Now, let's assume you have 5,000 US dollars in your pocket right now. A line of credit, credit card, cash, RESP, TFSA, borrowing from somebody. We are assuming you have $5,000. Go to Costco and gold. 1 ounce of gold, they have it at the counter. You can go and look at, they have a jewelry counter, gold bar, you can buy. And it will have a price written on it. Every item in the world has a price. Even humans have a price, emotions have a price. Being a psychologist, like background of psychology a little bit. So, but that's a different about. Let's put a number here. USD. So let's say you walk in today, go on your way to home or whatever, go walk into Costco and they will be selling an ounce of gold. 1 ounce of gold will have a price of 4,000 US dollar right now, approximately. We all dealing with US because that's the global currency. I'm not going to switch into Australian, anything like that. Just let's deal with US. So November 15th, you look at a price. Now you decide, I want to buy gold. Okay, give them $4,000. You bought a gold. Well, what's the next plan for this? Okay, what you would like to make sure the gold price goes up. ऊपर जाएगी तो पैसे बनेंगे ना. ये logical है. So let's put a 1 year from here. November 14th, 2026. 365 days approximately. What could be the price of gold? Can anybody say? कोई नंबर बता दें. अभी 4 आप 5,000 ठीक है. यस गुड. शायद नीचे चली जाए, 3,000 पे चली जाए, 2,900 पे चली जाए, 8,000 पे चली जाए. फरवरी से लेके जो क्रेजीनेस चल रही है 4,000 से, अगर सारे गोल्ड जिंदा हैं, रॉक के नीचे नहीं रह रहे, तो गोल्ड की प्राइस से सिर्फ देखा करें कि क्या हो रहा है. गोल्ड पागल हुआ हुआ है इस वक्त. So, but here's the thing. This 4,000 could be 3,500, or this 4,000 could become 4,500 a year from now. So, what do we call this transaction in our industry? You have opened a position. Okay, so so I'm again trying to explain it like an everyday person that, okay, what is this transaction? Anywhere, grab a seat in. So what is this transaction called when we talk about it in our language is opening a position. So I have to teach you some very basic, again, today is not a course, it's just a seminar. So I'll go try to keep things basic. So you have given them 4,000 US dollars cash. They haven't given you 1 ounce of gold. You have opened a position. Now, 2026 comes around. You go back online, go to a bank, go to a jeweler shop, and gold is trading again at a price. It could be 4,500. It could be 3,500. Okay. The time in between of this transaction is called an unrealized profit or loss. Unrealized, meaning you haven't cashed out anything. You have taken a position,
You haven't cashed out anything. If it's gone down, it's an unrealized loss. You haven't realized it, you haven't completed the transaction. But if it's in profit, it's an unrealized profit. Very simple. Now, so I only will teach you four things: opening a position, unrealized profit, and then when you sell this, maybe you need cash and you're like, you know what? I don't care what the price of gold is. I need money today. You sold it for a loss. Maybe you were lucky. You sold it for a profit. I don't know what the price of gold a year from now, and I'm not God or anything that will tell me. So this is called closing your position. That's it. Very, very simple. Opening position, closing position, in between unrealized profit or loss. That's how the whole world works, by the way. The whole world of economics, of finance, and now a person, everybody should have an answer to this. What caused this price in 1 year? 100%. So every single thing in the world moves with one concept: how much supply there is, how much demand there is. So the whole essence of trading falls into this one statement: supply and demand. If there is too much supply, not enough demand, price goes down. When there's too much demand, not enough supply, price goes up. That's how price moves, by the way. Now let's push a little bit, go back. In Canada, we live in a multicultural country. Canada is my home, it's your home. Any immigrant that calls Canada home, this is a home for everybody. Now, a lot of people who migrate here, because you have to understand, the beauty of Canada is it belongs to nobody, literally. Canada belongs to native Indians. Britain came, French came, a lot of Italians came a little bit early, Germans came. So if you go outside and if anybody tells you go back home, tell them let's go back together, because they have just arrived as well. They just maybe arrived few hundred years, maybe 40 years earlier. So no person can say to another immigrant, go back home, because we all just arrived in different times of our life. I arrived in 1996, so thank you for Canadian immigration. They let us in. So anybody who's arriving today, I always get surprised. It's the immigrant saying to other immigrant, hey, you should get out. It's just the psychology is wrong, though. So in Canada, after COVID, there was a lot of surplus of money. In COVID, what could we do? We can't go outside. Restaurants are closed. We can't drive. We can't travel. We can't go anything, but government is giving us money. If everybody got money, somebody got CERB, somebody got SIBA. There was too much supply of money in Canadian system. What did that happen? All that money had to go somewhere. It ended up going into real estate. So, because you have money, there's people say, all right, we have to invest somewhere. खा तो नहीं सकते ना, restaurant भी बंद है, airplane भी बंद है, कहीं जा भी नहीं सकते. I took and I ended up buying a property in London, Ontario. Okay, small house, little. So I bought, everybody probably you have heard, that's all. So what happened to the real estate prices? It skyrocketed. People have money, they want to invest in, so a small home become a bit higher, higher, higher. So the price of homes in Canada, let's say started here, started climbing, 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 and around here. Now everything, because why? Not enough supply. So we are coming back to the same thing. What is driving the price? Supply and demand. Everybody wants to buy it. Not enough supply is available in the market. Price goes up. So what happened recently? Immigration stopped. Canadian government said we're not going to issue more visas. Second thing happened, interest rates started to rise.
two things. So it is to cool off this economy. Prices started to go down, and right now we are in a position of opposite of after COVID. Too much supply, not enough demand. Why? Because hey, everybody was thinking it's going to go up, but every single thing in life doesn't have a one way up. It always goes up, always comes down. There's no such thing as complete bottom, and then there's no such thing as always going up. So the same real estate in Canada lost its value. House was the same, lot was the same, fixtures was the same, lumber was the same. First, there was not enough supply. Then there was too much supply, not enough demand. So right now, a lot of people. So what do we ask you? So what's the mistake here? Somebody bought a home around, it's called FOMO, around this level. Fear of missing out, right? When the housing prices were going up, this company was saying, don't do it yet. This is going to collapse eventually. It's not a fair buy right now. So we were all doing just analysis that, hey, how high can do? See, right now, price is going down. Every day you see, hey, somebody's losing their home or their deposit, and there's too much supplies available of condominiums. So what I'm trying to say is just like the Canadian real estate, you have this gold price that can move with one concept only, supply and demand. iPhone 17 came out September. Everybody wants it. Price is higher. Wait till about February, March, prices will come down eventually. New car, new everything, cost more, not enough supply. And then eventually calms down. Right now, there was a gold rush about 2 to 3 weeks ago. Price was 4,000, went to 4,100, went to 4,200, went to 4,300. The things that generally happen over a period of maybe years was happening in days. Sometime within a day, price of gold shot up $80, and it normally moves $4 to $5. That's how crazy. So what? Everybody's rushing. They want more. Price goes up. So in a very, very essence of trading is doesn't matter you buy gold or a home or a phone, you want to buy something at a reasonable price. Okay, it's a good price, enough demand, enough supply, and then you want to sell it with a reasonable profit. That okay, I will lock in my profit for. So far so good. You guys with me? Everybody that hey, what is we were going to ask you to do. Now you can sit in front of your computer 23 hours a day. And you can now buy and sell something online. Trading used to be very, very difficult back at least since 2008. Me and my friend, we're excited. We have money. We're software developers. A company, I will write a symbol here, 1688.hk. HK stands for Hong Kong. This company is named as Alibaba.com. Everybody's heard. Everybody's heard. It's a Chinese wholesaler. So around that time, this company, the person says, I want to sell this company in a public. So me and my friend go to Hong Kong with money, cash money. We fly to Hong Kong. We buy their shares. Share market में. Because why in Hong Kong? I couldn't buy this in Toronto. I couldn't buy this in US. It was only listed in Hong Kong Stock Exchange. So we went there, went to HSBC, 2008. We bought it. It had a price. We paid the price, we opened. So trading to me is not new. Just the style has changed. So if you asked, yes, it's been very, very evolution of trading. Now, with one computer right here, you can trade global markets 23 hours a day. So, coming back to gold, gold has a symbol. So, I'm going to write GC, MGC, and XAU USD. This is just one thing. You can trade
thousands of things if you like. So now you can, instead of having to go to Costco, you can open your computer 23 hours a day and you can trade. You can say, all right, gold prices, I'm buying something at $4,000 and it will go up or down, sideways, doesn't matter. So the whole idea of trading is you don't have to physically go anywhere. You don't even have to go to a bank anymore. With the computer, what is required though, by the way? iCore 7. So just that's the software that requires it and needs to be Windows, doesn't work on Mac. And at least 16 GB of RAM. That's the requirement, by the way, of your system. If you have a computer, look around, I don't know, go into systems, you need a system in order to do this. You're not going to be able to do this on a phone yet unless you learn the system. So as you get advanced, you can do this on phone as well. But Windows, iCourse, Windows 10 or 11, if you have, most people, if you have 16 gig of RAM, that's the requirement of this software. 23 hours a day, just open it up and you will see buy, sell, close, open. Open position, close position, buy and sell. That's how simple it is. So for the last 10 years or so, this product has now become in the hands of everybody. Here's the best part about all of this, and I will start to answer some other difficult questions. Please don't invest your own money into this, for God's sake. If you're new to trading, don't take out a mortgage. Don't take a loan. Don't empty your credit cards. If you're financially struggling, please, for God's sake, do not invest your money into trading. And again, I'm trying to answer questions that are standing here not making sense right now, right? You want to get into trading, somebody have introduced you, I've said it on the radio too, there are hundreds of companies out there who will hire you as a trader. So when you get into trading at the beginning, you're not going to invest your own funds. Somebody will give you $4,000, $1,500, $5,000, $10,000. And a lot of people don't know this. This is not possible, right? It makes no sense right now, right? Wait till the end of the seminars, you will see results. You're going to say, how come I didn't join it earlier, right? So there are a lot of companies who will hire you as a trader. They will give you the money. And if you lose the money, you don't have any, conditions to pay back. It's their money. They are looking for traders globally. So this is a very, very good opportunity now that now you can get into trading without risking your capital. So two benefits came out of it after 2023. This is not it's not a new thing. So 2008, I want to buy Hong Kong Stock Exchange, Alibaba.com. Let's say it's trading at $30 at that time, 30 HKD, Hong Kong dollars, $4 Canadian. In order to get into trading, I know you and I talked about stocks. It's expensive. There is a word that used in our industry of trading. It's called trading is rich person's hobby. I know it sounds कह रहे यार खड़ा होके कही क्या जा रहा है मैं नहीं sense करे ना कि if you want to be into trading, a lot of people say, well, I have stock market invested and I have this invested and I own Tesla and I own Amazon. Maybe you have done well in your life. Maybe your parents were rich. Maybe you have a good job. Maybe you're a doctor, lawyer, engineer, and you have some disposable income of, let's put a number here, $20,000. If you have around 20 grand, yeah, maybe buy some Tesla stocks, TFSA, RRSPs, cash. So RRSP, TFSA, you've been saving for some time.
maybe for 10 years, maybe for 20 years. You have $100 here, you have a savings fund and it has $20,000, and you go to a bank and you say, okay, I would like to invest this money in the stock market. So first they're gonna say you have money or not. If you don't walk in, you're like, no, not in. So how do you get there? My always goal is, if you want to get into trading, you have no money, you are kind of out of luck. That, hey, either your parents weren't rich, and then or you didn't have good enough job or inheritance so if you don't have money and trading requires money, how are you going to get there? That's a very genuine question, right? You do stocks. What? Nvidia is trading at $180 per share at the moment. If you need 10, that's $1,800. If you need 100, that's 18,000 US dollars. And you're like, my God, I'm not gonna put my money. Maybe I don't know anything about trading. So most people sometimes lose money by wrong recommendations. What does that mean? Somebody, किसी ने कह दिया यार इधर लगा दो, उन्होंने लाइन क्रेडिट से लिया, पैसे डाले, वो मार्केट क्रैश हो गई. तो हो जाता है. There's a company that just went bankrupt last 2 months ago. Company is called 23andMe. It's a DNA testing company listed on NASDAQ. Just went bankrupt. Share चल रहा था $5-10 का, zero पे हो गया. So a lot of people will lose money based on wrong information, based on wrong recommendation, and then based on यार इसने कहा है, maybe अच्छा trader है, शायद पैसे डाल देते हैं. Here's the statistics. Every trader is right at least 50% of the time. Trading is like flipping a coin. मैं कह सकता हूं ऊपर जाएगी, आप कह सकते हैं नीचे जाएगी. जो ज्यादा कहेंगे उधर प्राइस जाएगी, right? So no trader is 100%. The accuracy comes from prediction. It's a mathematical concept, and that goes as high as, if you're trading and you're in the 90%, you are considered a very exceptional trader. You have to go work for a firm like a bank or something. That's how good you are. Most people will fall within 70%. So they can take a trade, ऊपर गोल्ड ने जाना है, नीचे जाना है, साइड जाना है, जो भी है. I'm just giving you example. So all these people who sit on CNBC, CNN, Fox, analysts, so call them, they're just predicting this is possible. So they're just data analysts, including myself. So whenever we are analyzing something, so let's say you want to buy a home today. How would you buy a home? You will go to a real estate agent. He will pull up the statistics of your neighborhood and then say, okay, your home is valued at this price, or it should be at this price. All they're doing is something called data analysis, where they're looking at different things. So coming back to this, if you don't have 20 grand, how do you start? You say, yaar, 20,000 to nahi hai, 5 bhi nahi hai, 2 bhi nahi hai. So this is where we come in, and this is a trading called trading itself has a lot of products, stocks, options, bonds. I'm sure you've heard about it, crypto, everybody. So first thing is first, there's a lot of noise out there. So don't get excited just because somebody's posting something. Social media is garbage. If I post something, you have no idea what do I post. So just by somebody's posting their Lamborghinis or their houses, don't. So again, emotion. You can't easily get impressed. They say, all right, okay, yeah, isne ye kar liya. You know what happened here, by the way, in real estate? The word is called fear of missing out. So we're all humans. We all have family. We all have friends. We all have colleagues. We're all intersocial connected, right? So first person bought a home, let's say,
in your family. They booked a home and then they made a profit. And then you're like, all right, good. And then they made another. Eventually, so many people thought, hey, I'm missing out. I have to jump in too. And of course, there's a last guy who jumped in and the market started to correct itself. So there's always somebody losing for fear of missing out. कि यार मैंने अगर ना घर खरीदा या मैंने गोल्ड ना खरीदा या मैंने स्टॉक में ट्रेड ना किया तो यार सारे आगे निकल गए हैं मैं पीछे रह गया हूँ. So it's a human emotion that will destroy you. The idea is doesn't matter what people are, and especially in a South Asian culture, it happens. यार उन्होंने एक घर ले लिया उससे बड़ा ले लिया उससे बड़ी गाड़ी हो गई and then you're always feeling stressed about because you have to first again I teach less trading, I teach more system design and psychology is if you just step back and let it okay यार रश नहीं है क्या किस चीज का रश है यार क्या क्या उसकी अपनी डेस्टिनी है मेरी अपनी है मैंने उसको देख के तो नहीं अपना खराब कर लेना काम and a lot of pressure gets built around these advertisements are coming to you ये condo ले लो ये ले लो ये ले लो and you are marketed so heavily, then you start to make impulsive decisions. नहीं यार लेना ही है ठीक है जी देखो especially I talk to a lot of Punjabi community decisions लेने वो कहते हैं देखा जाएगा. That's the most difficult word I try to say don't say देखा जाएगा ओ भाई नहीं देखा जाएगा क्योंकि 50% तो देखा जाएगा फिर आगे जो होना है फिर हम देखेंगे जी देखा जाएगा. So, okay, यार ले लो देखा जाएगा. That's not the mentality that's going to work here. Please, a little bit slow down. If that's the type you have, don't do trading. I always say come back to, I know it's a bit of a humor in there too, is go make TikTok videos. You can make more money. If you are impulsive, if you have emotions, if you have, make a food vlogging videos, make a dancing videos, TikTok, Amazon. There's more ways to make money than trading, but you have to control those 4 emotions. Number 1, discipline. Number 2, fear of missing out. It's okay, यार नहीं है मेरी किस्मत में. So जिंदगी में किस्मत से ज्यादा नहीं मिलना और टाइम से पहले नहीं मिलना. मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ मैं 20 साल से इसको सिस्टम्स को डिजाइन कर रहा हूँ कि जो आपकी किस्मत में है ना वो हम सिर्फ यहाँ शो के लिए आते हैं एवरी डे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से प्लीज डू नॉट ट्रेड इफ यू हैव these 4 problems: emotion, impulsiveness, fear of missing out, greed, revenge, all these. So let's answer the most difficult question here for anybody sitting right here. Hello. Why do you have a need? I have a need for you. आपको सेमिनार में बुलाया आपको 12,000 मैं कह रहा हूँ आप भी मेंबर बन जाओ आप भी बन जाओ आप भी सारे मेंबर वो कहेगा यार इसका मतलब ये है ये ट्रेडर ट्रेडर कोई नहीं है ये सिर्फ अपना कोर्स बेच रहे हैं सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं बस जी ठीक है ये इनका इंटेंशन है इनके हमारे बने बने इनके तो बन जाएंगे ना यार. देखिए मैं बड़ा ऑनेस्ट आपको क्वेश्चंस कहूंगा because this is the best question. Everybody has it but everybody is so kind of scared to ask me. So I say one thing. This business falls apart if you don't have traders. So how does this business work? Now, every business in the world, I've given you a list of businesses. Okay, let's go back a little bit that what I've done in my life and few products I've designed. Okay, it's a satellite switch, it's a satellite dish, it's a mod chip, it's a receiver, it's an LNB, few different products I've done, few different businesses I've done. All these businesses aside, so let's pick my last business. Fat Sportsplex right here, indoor sports. It's I made a business. It's cost me like $800,000, and we made an indoor cricket ground, indoor soccer, indoor basketball, all the indoor sports. Glenn McGraw came, did the opening, cost me a lot of money. A lot of cricketers came.
GT20 people came, and but always we were like, hey, somebody can always do it better. It's a competition, right? So in by the way, in Toronto, there are 8 facilities that do indoor sports, and they have different rates. So you are always competing with another business, by the way, right? Um, then I wrote a website business. Then I brought in boxes. Rice has a lot of business competition. Clothing has a competition. Every single business, even a restaurant business, has competition. What are you looking for to do is you want to make sure nobody can copy you. By the way, in a business, let's say if you are a real estate agent, you want to be make sure that I am the best real estate agent and my business nobody can take, right? If you're in a restaurant, you want to make sure in this plaza nobody opens a restaurant. If you're a hair salon, you want to make sure I get the business. If you are a supplier or you make a product of something, you have to make sure this L&B, nobody can else copy my supplier. So every business in the world requires you to close guard the secret, right? Now, coming to my business of trading. If all of you start to go to, if I say I bought gold, $4,000, can you please go to Costco and buy gold? Can you go to Costco buy gold? You. There's 22 of you sitting right here. If all of you went to Costco and asked for gold, automatically gold price goes up. That's how trading works, by the way. The word is, again, supply and demand. We have 12,000 people globally. Every single day, our system sends an alert that, hey, gold is trading at this price. I think we should all can get in. Yeah, we could be wrong. We've been doing this since 2008. We're not 100%, but we're close to 90%, 87%. So when a signal goes out, 12,000 people, what do? They get up, they buy gold. I need 12,000 more. I need 1.2 million users globally. So do buy and sell together. It's a community, it's a group. So what is it, what's the benefit of me? I don't care about your little membership that you pay here to sit here. We pay more to our mentors than to you can sit here for what the levels that we give you. The idea is when we all buy and sell together and we all make the same decision, we can create a powerful enough momentum. That's it. You're doing an individual. See, individual trader has no value. But the moment you have groups, I belong to groups, 200,000 people, 300,000 people, they will send a signal. We're all going to start crypto at this level. And we're going to go in and out. So they are called the market movers. So it benefits each and every one of us. Right? So the whole idea is to work together. Is not, again, I'm not after selling my course. I'm not after selling my software. I want to make sure that my community is big enough. 12,000 is not enough. Even like there's 7 billion people on this planet and more than 100 million people trade actively daily. So the bigger the group, the better it is for understand. So that's why do you have TikTok? I gave an example earlier. If there was only one video and nobody was uploading any video, the algorithms. So what shapes our life, by the way, in math is algorithms. If somebody knows what an algorithm is, the word is very simple, algorithm. So if you have a street lights, right? Just I know, pay attention to basic things. How does a street light work? If anybody knows, you have a green, you have a red, you have amber, and then you go. It's a system driving everything. Do you see a person saying, now you can go, now you can stop? They have taught you everything. G1, G, and G2. You approach a signal,
It's red, you stop. Turns green, left, you turn. So the whole social structure, I think, I don't know per how many people it takes to run one cop. Like basically one cop on top of a number of people. One doctor. The systems have power, algorithms have power. So these softwares in the world can change based on if there's too much traffic. I was lucky enough to go to Europe and I studied their Autobahn German speed system. They have no speed limit, by the way, in Germany. And a lot of it is fully automated. They will close certain intersection based on how much software, how much camera, how much AI is detecting, all of it. So these days, our whole life, by the way, is run by software. You sit in your car, it's run by software. You tell me your life without software. I call this to my kids, this is your umbilical cord, by the way. Try leaving this home. This feeds you. It is your umbilical cord. जुड़ी नहीं हुई पेट के साथ, लेकिन like you try leaving this today. Let me see how far you get life. I still know my Kitchener phone numbers 519-722-7434. That was my number. Try looking left around. यार नंबर बताइए, आपको अपना नंबर नहीं पता होगा, हजारों कॉन्टैक्ट्स रखे हुए हैं ना. तो हमारी पूरी लाइफ चली गई है डिजिटल सोशल एआई के अंदर, हमें पता नहीं लग रहा. हमने क्या बेनिफिट लेना है? यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर, we're going to make some money from this business called online trading. Most people again will fail not because of the software. Most people will fail because you will have this one effect. You will sit at 9 o'clock in front of this thing. You will click one button. $400, your account will go positive. Let's say, I'll give you an example. NASDAQ is trading, it's 20 bucks a lot, and you hit one lot and boom, market goes in your favor. You will not be the same person ever again. I will tell you, this is one thing is, एक दफा आपके ये DNA में घुस गया ना, इसने कोविड की तरह वापस नहीं जाना. मैं आज बता रहा हूँ. So come back. Today again, there's no buying and selling happening. I'm not here to sell you anything. I'm just giving you. So be very, assess yourself. We're gonna give you this drug for 14 days for free. If you are the person who is gonna mess it up, please don't join because it's highly addictive. I have people who can lose a lot of time, not so much money. These days, you're not losing too much money on it. You're mostly losing time. A lot of people would sit and trade and trade and trade and trade and trade, and then their whole life gets messed up. Because what will happen is you click, you learn the software. Those I know he's smiling. Stocks and options don't give you that impulsiveness. There's the product that we introduce for everyday trader. It is very rapid. 7 seconds, 10 seconds, 20 seconds, 1 minute, maybe 10 minutes. I posted my results on Friday on our groups, 15,000 US dollars in 2 hours. I know, crazy, right? ये कैसे हो गया जी? ये होता है. I will soon 3 o'clock, we're going to start opening up results. How much everybody got paid? 1,000, 2,000, 5,000. But remember, 97% are still losing time today, not money. They're not losing money. They're losing why? Discipline nahi hai life mein. So if you have that type of a person, you are free, fear, greed, emotions, please don't do this. This is highly addictive. Some people say trading is gambling. Okay, let's discuss that. Let's define gambling first, क्योंकि मैं पहले उसको तोड़ देता हूँ. Been to casino? Anybody have been to casino? Everybody has been to a casino, man. How do you play roulette? वो बॉल घूम रही है, उसमें एक व्हील है, उसमें एक बॉल है और कलर है. आप $50 निकालते हैं and you put it on the thing
This is entertainment. So if you're gambling for entertainment, hey, no problem. Lottery is gambling too. So it's entertainment. So don't mix income, job versus if you go to casino for entertainment, I don't care, slot machine, hold your $20, no problem. But how does roulette work? And how does, because a lot of people saying that trading gambling. So roulette works this way. You put your wager, $50, you pick a number, you pick a color, and then you spin. So the outcome will decide your profit or loss. If it doesn't land, so you open a position. If it doesn't land there where you want it to be, so you pick a number 17 red. You have put $50. If it lands right there, maybe you will win $1,000. Poker or whatever the game may be that's going on. But if it doesn't land, boom, there goes your $50. Now, let's analyze how does that work. The math says random. There's a word called random. You have no idea where it's going to land. You have no idea how it's going to land. It's purely based on luck. How many times you play versus how much money you make. It's all, there's no math behind it. Poker, some people say they can count cards, things like that, but whole gambling industry is based on randomness. Math of it works random. So flip a coin. It's random, heads or tail. Lotto 649, $5 ka ticket hai. Pick a number from 1 to 49. Maybe you'll get 3, maybe you'll get 1, maybe you'll get 5, maybe you'll get 7, like all 6. If you get all 6, you should be in Cuba, not right now. But here's the problem. Lottery is gambling. Why? That's why it says OLG, Ontario Lottery and Gambling Association. Why? Because the outcome of the result is so random that, but you know what, here's the best part about it. Every single Wednesday, every single Saturday, somebody does win. इसीलिए बाकी लोग, हजारों लोग जाके क्यों वेंसडे में लाइन पे खड़े होते हैं कि मैं अपनी लक आजमाऊंगा, मैं $5 दूंगा, शायद मेरी किस्मत निकल जाए. किस्मत पे डाल दिया ना. So it's all based on destiny, fear, emotions, greed. कि यार देखें यार उसने जीता था क्यूबेक में, उसने नोवा स्कोशिया में जीता था, तो शायद मैं भी अपने $5 लगाऊं तो लग. So but you are fueling the 90, you're the 97%. Somebody will win. Yes, correct. Correct. Somebody. Now I'll give you an example of a greatest scam artist. You pick 100 people and you tell them 50 people, listen, because I deal with math every day. These 50 people, कि यार चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, लगाते हैं कि यार इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा. अब मैंने आपसे अब डिवाइड कर दिया ना, आपके तो पैसे लूज हुए, मैं बैड ट्रेडर हुआ. इन्होंने कहा यार इसने प्रेडिक्शन बड़ी अच्छी की थी, अब मेरे पास 50 का सेट है, अगली दफा इन 50 को फिर मैं स्प्लिट करूंगा, इन 25 से कहूंगा कि यार इंडिया जीतेगा, इन 25 से कहूंगा पाकिस्तान जीतेगा. यू नो दैट्स हाउ बेटिंग गोज बाय द वे. अब इन 25 में तो जीत गए ना, अब ये कुछ ऐसे सेट थे तो दोनों दफा जीते. रिमेंबर क्या हो रहा है आपके साथ. अब उन 25 में से 12 रह जाएंगे, उस 12 में से जब 5 रह जाएंगे ना, जो पिछले 5 दफा जीतते आए हैं, उनसे कहूंगा यार देखो जितने मैंने ट्रेड किए थे सारे सही गए हैं, दो $10,000. तो जितना मैंने, that's how the gambling works with the sports betting. That they just keep eliminating the people and go towards the winners. That's how, by the way, the whole. Anyway, trading is not gambling. It is depending on pure assets, companies, NVIDIA, Amazon, Walmart, Pfizer, AstraZeneca. Doesn't matter what company. Gold, crude oil, natural gas, like world commodities. It's like crop. So you have to understand trading is not gambling. You are buying and selling something real. The outcome is decided by if there is more supply or more demand. It is not gambling. You know what is gambling? Let's say you want to buy a car. कार आप कहोगे यार कार में गैम्बलिंग कैसे आ गई. So you're looking for a Toyota Camry
year 2022 क्या है प्राइस चल रही $18,000 ठीक है so you have 18,000 you have a budget you see a good car on marketplace and you go and buy if you don't do a transmission check an engine check a paint check an accident a report you're gambling by the way when you pick up a life partner and you don't do a due diligence that's gambling, by the way. Anytime, like I know I kind of make it look like too easy in a real life scenarios, right? Any single time you have no due diligence of anything, you're gambling. So if somebody says, यार मैं आपसे कहूँ आपको यार आपसे यार खड़ा है मैं कहूँ यार Nvidia खरीद लेते हैं आपको कि यार ठीक है खरीद लेते हैं आपने कहा है ना तो देखा जाएगा. That's what I'm trying to eliminate. You should be asking me यार क्यों खरीदे Nvidia या Tesla या Bitcoin या crypto या like whatever so the answer should always become why should I buy what you are telling me to buy let's analyze let's do our due diligence is there enough buyers here is there enough sellers here what is the market saying tomorrow what is so all of these decisions will be based on some data analysis. So this is again coming back to the software of TikTok. When you scroll a video, by the way, I looked at the data. If you are on that video for at least 32 seconds, you fall into automatic recommendation category by TikTok. So you are watching a food video, somebody cooking, or a construction video. You know how fast it is to scroll? So the attention span, TikTok can now look at the following. Next time you will pay more attention to live where your eye pupils are. What part of the screen you're watching. How long you have been watching. These are called in life data points. So GPS Google use करते हैं. आप कहते हैं यार मैंने अभी फोन को उठाया नहीं और कहता है कि 45 मिनट टू वर्क ये क्या स्टूपिड कहता है ना because it is tracking you it knows your behavior your banking system your every single system in the world is now heading towards automation it will track you it will monitor you अब आप ना एक क्रेडिट कार्ड इधर खर्चा एकदम कहीं लाइक यू नो मिनेसोटा में हो गया उनकी अलर्ट आ जाती है कि यार ये क्या हुआ 15-20 ट्रांजैक्शन यहाँ हुई एकदम ट्रांजैक्शन उधर हुई so whole everyday life works with software and this is how where we come in and we look at patterns so when more people are using our software it is helping us design it better so that's what I'm after I'm not after I need thousands of people who can make my software algorithm better. Yeah, you may not. I get to know nothing about your in privacy. I don't know your account number. I don't know how much money you have. I have nothing to do with any of this. However, when you use the software like TikTok, like Google Maps, like YouTube, we get data points, and that's what I'm after. When 12,000 people make a decision. Well, our server picks up, says, all right, there's a lot of volume there. Something is happening somewhere here. Send out an alert. An alert will mean everybody wins together. So the more people that you have inside the pool, the better it gets for everybody in terms of analysis. So same idea. When more people buy stocks, price of, and there's two main examples of stocks is there's a company called GameStop. Everybody heard. Online, everybody just said go long. Big guys were saying go short. They were saying go long. And you have a lot of this chaos. And a lot of people made a lot of money altogether. So if you're new into trading, you can start part-time. You don't have to quit your full-time job. Approximately, so today what will happen after the tea break, I'll explain you the process. You will join our trial program. Trial costs you $0. We will give you everything. The software, the algorithm, all the tools you need
to be able to understand it. 14 days, you will test this. If it makes sense for you, use it. If it doesn't, uninstall it. I had a very skeptical person says, I don't even have a laptop yet. I said, go to Costco, buy a laptop, try 14 days. You don't like it, go back and return the laptop. It's okay. I'm after data points. I'm after being a systems designer. That's what helps me to make a better prediction. More people testing the software, the better it gets. Now, TikTok has millions of users. Instagram has millions of users. Yes. Does it need to be a laptop? What about It needs to be a laptop because it does need to work. I'll show you the software. It works a very heavy software. So you need to be able to do it. Once you are experienced, you will still do the analysis on computer, but then you can do the trade execution there, right? So what is trading? We are done. Discipline, cost versus benefit. This is, again, now let's do a little bit of a cost versus benefit. How much this is going to cost, how much money roughly you can make. I don't know, or I don't care what your wallet size is. You could be in deficit. You could have $100 million saved up. I treat everybody same because I treat you as a data point. I'm not treating you as your capacity of how much you can spend. You can start this part-time. If you're a student, my son goes to Ted Rogers University, 18-year-old, is finishing his year one, semester one. He's 18, doing marketing program. I got him involved into this. He does this no more than 60 to 90 minutes daily. You don't have to quit your full-time job. You don't have to worry about it. You don't have to invest 10 grand, 5 grand, 100 grand, 20 grand, nothing. Because that's why I wrote 20 grand is a lot of people have, if you had met me 20, maybe 10 or even 2020, I can't talk to you about it because trading requires money. Simple. And I'm going to say, sorry, I don't have a product that I can get you. But today, after 2023, there has been a big change, and now you can trade without your money. That's the best part. Some users make an average of 12,000 US dollars per month. We will get you started somewhere within $100 per day. So this company, Will Lifetime, we are a subsidiary of it. We will get you started somewhere between $100 a day, $150, $75 a day. That, hey, we can teach you that you can trade without your own money. You can trade something, understand the system, and you'll be able to make somewhere 50 to 60 to $100 a day. There's no up limit. I have a user. You'll get to meet him today. He works for Air Canada lost luggage department. He hurt his back. He hurt us. He came in, wasn't sure. It took 3 months, by the way. So give yourself 3 months. So there's a true learning part because you have to understand you want to pick up a new skill. Let's pick a new skill. I would like to fill in the blank. Learn to trade. I want to ride a bike. It's a skill. I want to learn to sew. I want to learn to do piano, skating, skateboarding. Pick it, doesn't matter, skill, right? An average person takes about 3 months to develop some new neurons about that skill to understand it. Now, this is where this analogy comes in. I'm going to write this. Maybe one or two of you can read it. And you say, all right, it doesn't make you less intelligent, by the way. This is just my name written in my language. It's Urdu. I can't write Punjabi or Hindi. But if I taught you alphabets, hey, this is an F. This is a Y. This is an A. R. Eventually you will pick up. Maybe 1 month, maybe 2 months, maybe 3 months, maybe 4 months, depending on how much interest you have. Right? So based on a new skill, it takes about 90 days to. So
learn to skate. Yeah, so kids do this much faster, by the way. Kids at an age of anywhere from 3-year-old, they do exceptionally well. So I have 4 kids, I put them in swimming. I can't swim, I put them in swimming. I can't skate, I put them in skating. My daughter does snowboarding. I said you should do it. But all of these kids now, one of my child I know from a Muslim community, I made him a hafiz, we call it, meaning that he has to memorize the holy book. But you know how big and thick that book is? But you have to do this at an age of 3 plus or 4 plus. You cannot learn a new skill after the age 18. Your brain pretty much has matured to a level. You're not looking for too much change. You're looking for stabilization, especially after 50. It's a bit of a downhill, not a bummer, but you kind of take on things less approach. You're like, okay, yaar, zyada cheezein change na karni pade. Halka. So younger you are, the better skill you can get. But then this system, as long as you follow, you'll be fine. Money wise, yes, it will take you about 3 months of your time in order to learn it. There's a big learning curve. So in 14 days, you will decide you want to do this or not. It's okay. There are 7 billion plus people on this planet. I can't win them all. I have a very mathematical specific number. 1.2 million users. That's it. I don't need 1.3. I don't need 1.1. I'll get there eventually. It's okay. We'll do more seminars because globally, I can't reach everybody, right? That's just not possible. Even an iPhone has a competition called Samsung. Like BlackBerry was once the big king. Now Nokia was once the big thing. No, they stop innovating. They lose their coolness. Anyway, so 14 days you will be given some videos to watch about the software, about the industry, because again, I have to first teach you the alphabets. Okay. And being my favorite subject being psychology, all right, you have the alphabets. So I'm sure everybody can read A, B, C, D, right? What's the next thing they teach kids? My daughter is in grade 2. They don't teach you moving averages. They teach you shapes and colors. So even though all of you are adults, we are going to put you in a very basic program first. Because you have to understand, so taking on a new skill, we're going to teach you first the alphabets. Then, you know what they will do? They'll start teaching you a word. This is cat. English is, by the way, my second language. It wasn't my first language. When I came in, somebody swore. I'm like, all right, I don't know what they say. So from cat, now is the next thing is your sentences. From sentences, we'll start teaching you paragraphs. From paragraph, you can start writing stories. So, but end of the day, it all begins with some alphabets. Like if I, again, giving you example, analogies. I'm sure all of you have G licenses, right? Somebody has AZ. Imagine करें G1. सर यील्ड साइन सबसे मुश्किल है मेरे हिसाब से, नहीं समझ आती. कनाडा में यील्ड साइन होता है, बाकी दूसरे यील्ड होता ही नहीं है. मैंने मुश्किल है ना, एक प्रोडक्ट है, मुश्किल है. तो G1 to AZ सफर आपके लिए तो अब मैं वीडियोस देखता हूँ, वो पार्किंग लॉट पे पूरा ट्रक ले जाते हैं अंदर. ठीक है, आपके लिए इजी है. जिनके पास नहीं है उनको मुश्किल लगता है. जिनके पास G है कहते हैं यार G2 यार तू पैरेलल पार्क नहीं कर सकता. ठीक है ना. अब जिसके पास G2 है उसका फियर हाईवे है. ठीक है. जिसके पास G1 है उसका है यार मैं बस ऑरेंज व्हील चला जाऊं, वहां टेस्ट इजी होता है. ठीक है ना. वो फियर है ना इंसान का कि यार वहां चले जाएंगे, टेस्ट आसान होगा, ट्रैफिक कम होगी. गल्फ में टेस्ट दे देते हैं क्योंकि G1 से निकलना है. G1 वाला कह रहा है यार मुझे शेप साइन याद हो जाए, क्योंकि मेरे आगे जो शेप साइन तो मैंने कर लिए हैं, वो जो रिटन होते हैं ना वो भी समझ नहीं आ रही.
Right? So idea is all of this doesn't make you less intelligent. It just requires some patience and requires to pick a skill from G1. And now most of you drove here without any fear. Try the first time you got to know how to drive a car. I'm sure you couldn't put on a music. Sure, because I've been through this, right? First thing is, I'm sure you can't even have a coffee beside you. You're on like, hey, nobody distract me, I'm driving, right? And now, all of this trip here, half of you won't remember the trip. It's all automated. Your subconscious did the work. You looked at the red light, your mind, your leg, your feet, your steering, all did the work. You all arrived here without doing any work, kind of, because your brain got enough training. So a lot of people on Friday watch my YouTube video, which I posted on Friday, our seminar that I do every day. People say, "ये मैंने यहाँ से नंबर कहाँ से उठा लिया?" मैंने उनसे कहा, NASDAQ 250 पे सेल कर देना, NASDAQ 650 पे बाय कर देना. It's not that I'm a magician or anything. I just watch this thousands of hours, and then my brain has inherent instincts कि यार अगर ये होगा तो ये होगा. So all of us are just trying to get better at predicting, and this software will help you a lot in terms of. Now I'm going to stop for 1 minute. Any questions so far? यार अभी तक ठीक जा रहा है, सही जा रहा है. Go. All right. 3 months approximately, you will get to learn. Let me show you what this is all going to look like. So website is called SuperAreas. I encourage everybody to create a free account. Doesn't cost you anything. You're gonna just, it says click here to sign up. Pick a country, Canada. I'll help you solve these questions yourself. Again, मुश्किल आ रही है. Pick your first name and last name, your email, your phone number, and if you don't have a computer yet, just put 0 for now. So you sign up there. Our backend team will get an alert, somebody signed up. So we have a staff that takes care of it. They will activate you. Okay? So once you're activated and your account is approved, you will log in. Let's log in too. Oh, from a discipline point, this is my login here. So you're greeted with a dashboard. This is the dashboard. You will see a few different things. Now, this is me, 208 kilos, 108 kilos number. What happened was, when you write software, you tend to don't be a social person. That's all. You whole night you're sitting, coding, analyzing, coding. So after the jobs, you are not talking to anybody. You gain weight. Why? You're eating junk. Your call center is in India, in California, in UK. You're doing a lot of night shift, and you're doing a lot of work. So you put on a lot of weight. So this is me in Kitchener-Waterloo and talking to an IT conference with. So he lost popularity. I lost weight. Right? So 2 things happened since then, right? So what I'm trying to say is, when I got this job, they said, "Hey, this is not gonna work. You're gonna have to start speaking to people. You have to present the system design." So they put me on a little bit of a program, a system. So I went to UAE with this weight, and I wanted to skydive. All right, me and my friend. So you know how embarrassing it is when they take you off the list just because of your weight? Because when you are skydiving, generally you're attached with somebody, tandem jump, right?
100 kilos is the maximum they'll take you. So I'm 8 kilos above, and they're like, come on, buddy, you're not going. And it's pretty embarrassing. So at that time, it was a turning point. I said, come on, man, I can't enjoy some activities. So it took me a year to lose a bit of weight. So how did this happen? I designed a system. As an IT guy, I said, okay, what is my goal? My goal is to lose 8 kilos. What can I do to lose 8 kilos? All right, took a few steps, couple of IT things, and then I eventually worked towards a goal. So here we'll define a goal too, and we'll make a system to work toward it. So your goal is to learn trading and discipline. And if you think, by the way, your discipline, cross that. So you drove here, everybody who drove here. Anybody did 180? 150, 160 और आपने तेज चलाई है, लेकिन ये डिसिप्लिन से जिन्होंने चलाई है वो डिसिप्लिन से नहीं चलाई, फियर से चलाई है. बिकॉज द फियर इज कि अगर पकड़े गए तो टिकट मिल जाएगा ना. सो ऑल ऑफ you think you have discipline, you don't. You are in a controlled disciplined environment. Stop showing up to work. Hello ji, grab a seat anywhere. Stop showing up to work, they'll fire you. Stop going to school, they'll kick you out. So you just think that you are disciplined, you're not. You are forced discipline. So it takes real change in your certain behavior to understand what discipline is. Coming back to it, you're logged in. It says Academy and access to our software. That I always say software because you have to understand I'm not selling a course though. A course is a different thing, a teaching course about cooking, like, ingredients or like whatever. I'm giving you a software. You have to learn to use the software. It's not a course. Course is different thing. That's why we always say you have to, but the software requires you to put in at least 25 hours of work, minimum. Meaning it's free. You haven't paid me anything, by the way. You have logged in. I've given you the access. You are watching how my software works. I have to teach you A, B, C, cat runs. I have a cat. पाकिस्तान में लिखते थे ना टेस्ट, बेस्ट फ्रेंड का टेस्ट था, बेस्ट डैड पे लिखाया. आई हैव मल्टीपल डैड्स. पता था नहीं कि फादर पे टेस्ट आ गया, याद किया हुआ था फ्रेंड पे, तो सारे का सारा फ्रेंड पे कॉपी करा है क्या. Everybody has multiple friends, multiple dads. Anyway, long story short, I know a bit of a humor there too. So if English is your second language, watch us in Hindi. We have recorded our CEO's recording. Okay. These are snippets divided into 2 to 3 hours. You're going to watch. Zero cost. I'm not making any money from any of this. I'm going to give you all the materials for absolutely free because I want you to decide after 14 days if this is worth it. If you can do it or not. Because I bring you in, you can do it, you have problems, then it's hard to say, okay, yaar, aap nahi kar sakte. Or so there are 5 videos for you to watch. Whether you watch them in English only, or if you are into English is your second language like me, you can watch them in Hindi. Hindi, Mr. Daniel, like. So there's some work for you, cut out for you. 14 days today, you will sign up. You have, let's say, what is it, November 15th. By December 1st, don't log in at November 29th and say, come on, yaar, main bhul gaya tha, main ye ho gaya tha, wo ho gaya. Then the system needs to give you more trial days and it's not worth it, right? So what you're going to do is you're going to watch these 4 to 5 videos. If it gives you a little bit of an interest, अंदर से थोड़ा सा spark आए,
देखिए पहले तो अपना गोल डिफाइन करें, मैं कर क्यों रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा हूँ, नई स्किल सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व टू प्रॉब्लम विद वन स्टोन. Number one, of course, you use the software, my software algorithm gets better. More people come on board, I get more data points. Number one. Number two, this knowledge, if somebody says to him, आप इनसे कहें कि टेस्ला खरीद लें, यार आप ब्लाइंड एक्शन ना करना, बेशक इधर ना करो, इधर हमारे पास ना हो, कोई आपसे जिंदगी में कोई कहे ना कि यार खरीद लो, आप सिर्फ ये करो, वेट, रुको जरा, मैं जरा एनालाइज थोड़ा सा कर लूं कि आपको कोई यार धोखा ना दे दे. Because the way I see technology, a lot of people, there's going to be a shift of a huge, two sets of people are going to go. One who will make ridiculous amount of money, and then the general population. And then the general population, I don't want you to be this guy. कि यार मार्केट फुल पीक पे थी, किसी ने कहा खरीद ले, आपने खरीदा, वो मार्केट डिप हुई, अब आपके पैसे भी गए, टाइम भी गए, कॉन्फिडेंस भी गया, इमोशन भी गया और दोस्त भी चला गया. So the whole idea is to make sure that you make in life. Here's the big issue. A lot of this is just self-taught, meaning none of this is taught in high school. Unless you pick economics as your degree, finances as your degree, you're not going into this direction, right? This is not my background. My background is writing software, but I got introduced to it early age that, hey, how stock market works, how the supply and demand works and everything. So it kind of gave me a big interest in it. My son is 18. I said, hey, if you would like to get into it, you should. Okay. Did I? Sorry. Oh, sorry. कोई बात नहीं. It's okay. So मैंने कहा मेरा हो तो पता होना चाहिए कौन. I don't have this kind of ringtone. So the idea was that, okay, you should get into a little bit of a finance, just learning from it. Again, if your objective is earning, we'll get you the earning part done. If your objective is learning, we have enough creative classes that you can take to understand this industry better. What is this? So you can ask me a PhD level. How does the moving divergence works in a certain thing? We can answer that if you're that type of person. If you say, यार मेरी मॉर्गेज बढ़ी हुई है, मुझे रोज के $200 चाहिए, मुझे ये नहीं सीखना, हम आपको वो वाला मेंटर देंगे. 8 मेंटर हैं, आपने ये सीखेंगे, उसका बाद आपका गोल डिफाइन होगा. गोल क्या है? मैं सारों को एक गोल देता हूं, 1 साल में ना ये पैसे इकट्ठे करें, $20,000, किसी तरह करें, करंट जॉब से करेंगे. अब मुझे नहीं पता, कोई इस वक्त एवरेज जॉब कनाडा में दे रही है, let's do $18 an hour. This is the bottom of the bottom, entry level, Tim Hortons, like you can go to a grocery store, entry level, minimum wage, right? So an $18 an hour requires literally having a pulse and make sure you're in physical ability to work. So you can stand at a Tim Hortons, you can do grocery bagging, general labor, you can make in Canada, in Ontario, Toronto, $18 an hour. Now, a person who is just starting, so as you graduate, I always give you this example. Let's make it easier for math purposes, $20 all the way back to up to $100 an hour. So my dad came to Canada from UAE and Middle East. His profession is forklift repair. That's what he did. He can rip apart a forklift. He knows everything. Then he got into manufacturing. Forklift in Canada will land you somewhere $30 to $35 an hour. Okay. Just grab it. So I know it's gonna get crowded. So for $20 an hour to $100 an hour, generally, if you look around, so minimum wage, a little, yeah, नहीं कैमरा इस साइड पे है, कोई बात नहीं, इधर आ जाए, ये वाला ले लें.
So if you're least qualified, sometimes more qualified people earn less, and it's life. It's unfair. It's okay. Sometimes you're back home, you're a doctor in Canada, you're driving a cab. So I know playing fields are not set even, but I'm just saying, $20 an hour Canada, you can work at a dollar store, Walmart, grocery store, and make $20 an hour. $100 an hour will depend on your experience in life, how long you've been doing certain tasks. So a lawyer, $100 an hour, generally is one signature. A closing file in Canada for a small home is about $1,400. It's an office, it's a closing. I deal with enough people. 1400 में फाइल क्लोज हो जाती है और लॉयर उस वक्त आता है, अंदर आएगा, 15 पेजेस उठाएगा, हर एक पे आएगा आईडी दो, सिग्नेचर, क्योंकि असिस्टेंट ने सब कुछ सेट किया हुआ है। एक सिग्नेचर के वो 1500 लेगा, वो डिवाइड होंगे, तो हम कहते हैं यार उसके एक सिग्नेचर की वैल्यू 1 घंटे की $100 है, क्योंकि लेकिन इट टुक हिम और हर what 20, I don't know, not 20, maybe 7 to 8 years of life to get there. Now start scaling down. A plumber in Canada can easily earn $60 to $70 an hour, but at least you got to give it 5 years. Electrician, 5 years. Now you start going this. If you're a student, walk in, get a job, $20 an hour, somebody can give you to find a minimum job. Forklift driver, operator, 2 to 3 years of work will give you that much money and time. So what I'm trying to say is, how long to earn $100 in one day? Now those people with AZ, एक लोड कैलिफोर्निया का कैबेज के साथ जा रहा हो तो अच्छे टाइम पे 12 से 15,000 दे देता था। ठीक है, अगर मैं कहीं रॉन्ग हो रोक दीजिएगा। 15,000 मिल जाते थे। अगर 2 हफ्ते का ट्रिप है या जो भी है, 2 हफ्ते में 15 से, अगर 3 भी हफ्ते लगाए 15,000 तो आ जाते थे। वो कम होते 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 कोई 8,000 पे आकर रुक गया, ब्रेक इवन पे हो गया काम। So logistic is crying, hey man, there's not enough loads out there, I can't move the product, everybody's undercutting the price, right? So same people, real estate agent, they milked everybody. Or in his case, that it wasn't, it's the market was dictating. You bought a home and you flipped it. Okay, you went, sometime you were doing just a file moving. What does that mean? Let's go back to 3 years ago. You book a condominium or a home, pre-construction, $500,000. You take out that worksheet, you go in the market, say, I want to sell that. Maybe that home is sold for instantly for $525,000, $530,000. So a lot of people were flipping these contracts much faster. Like then they were actually overvalued instantly, like the gold price I was saying. Too much supply, too much demand, not enough supply. Eventually, you bought a home, 2 साल में उसकी प्राइस $1,00,000 बढ़ गई। आपने $1,00,000 1 साल में कमा लिया, किसी का कमाल नहीं था। मैं हमेशा कहता हूं कि रियल स्टेट में किसी का कमाल नहीं होता। Why? Supply and demand is moving. So same real estate agents who were closing deals well over maybe 4 to 5 deals a month are now struggling to close a deal, maybe 4 or 5 deals a year. Why? Too much supply, not enough demand. So it's all the economics of this. So coming to our online trading again, your job is going to sit in front of this computer, pick a product, trade, make money. $100 to $200 daily. If you follow discipline, if you follow one of our mentors, Mr. Happy sits right here. This is his seat. Mr. Murtaz sits there. Mr. Herneet, Ramanik, Tulip, myself, Vikram. We are the persons who are doing the analysis part. At the beginning, you're just following. And if you follow properly, you should be having no problem making a couple of $100 a day minimum. As the time grows,
You will have your skill go very quickly, because to make $500 every day in online trading is less than 90 minutes of work. Less. Sometime that work is done 10 minutes. Sometime that work is done in 90 minutes. But generally, that's the average of making about $500 a day US. But it comes with a little bit of a work. You're gonna log in. If it excites you, do it. If it doesn't, uninstall it. I don't care. It's okay. We'll do another seminar, another 40, 50. We will show up. Again, I'm not after 7 billion. I'm after 1.2 million. Very statistically math-based number to do it. So, अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ Q&As. Please ask me questions, so that way, maybe it's a small question, somebody else will benefit. I don't care how hard, how tough, how rude you think that question could be. That's what I'm here for, right? So you're explaining so well. No. Sir, अभी आपने तो बहुत late join किया अभी तो. No. Okay. I know it sounds overwhelming. Now I'll show you the software. For those who have never seen this software, let's look at. Let me log into this. क्वेश्चन हमने टेक्निकल. हाँ, टेक्निकल करते हैं, no problem. Okay. So we have spent over 20, this company, not me, I've been with them for 5 years. Over 20 years of engineering, software, system design. It's again has gone into designing this. What would it take? What is the objective? A person who has never traded before in their life, because I can pick a person with zero background, zero, never traded before, an Uber driver, a construction worker, I don't know who doesn't have it, and I have a goal. So that's the problem we're trying to solve. That without teaching you anything, very basic, I want to make sure you're able to use my software, give me the data points, and you can make money along the way too, right? So I know this looks complicated, right? I know a lot of things are happening. I'm going to shrink it down slightly. So all of you will become a trader in less than 5 minutes. You're going to say, yeah. All right. Let me start this is the full version of it. I want to give you first the letter A first. You see, every time you will see this now, you're going to say, oh, that looks like an A. That's how language is learned, by the way, with shapes and colors. Remove. You see how it's getting a little easier, cleaner, basic? Remove. Okay. All of you have never traded before, right? Tell me, every time there's a black line, what happens? Change. Just if it's going up, there's a black line, starts to go down. If it's going down, black line starts to go up. A आ गया समझ? ठीक है? ये इतना आसान करेंगे आपके लिए, क्योंकि idea is to build it for somebody who has never traded before. Never. Because that's the goal, right? The goal is not to overcomplicate it and start to do, oh my God, divergence, moving averages. Yes, we will teach you. But the ultimate goal at the beginning is, if I ask you, every time you see green, what should you do? And I will tell you, you should be buying. Green is buy, red is sell. Okay, so far so good. That's it. B आ गया. अब हम पूरा 26 है ना अल्फाबेट्स में.
नंबर 3, 2 ब्लैक लाइनें ऊपर जा रही हैं, 2 ब्लैक लाइनें नीचे जा रही हैं, ठीक है? यहाँ पर भी so far, so anywhere, anytime you lose me, just raise your hand, say, can you step back? If I ask you one thing, that every time the background is green and your white line touches this green line, click buy. That's it. That's it. Like, I mean, you're gonna say, my God, itna aasan hai? Yes, I know, it's too good to be true. Because just because, sorry? Okay. So, number 1, every time there's a black line, it changes. That's number 8, right? B, what's the background color? Green. तो आपको बता, आपके ब्रेन को ट्रेन कर दिया है कि ग्रीन से बाय है, रेड से सेल। ब्रेन में आगे ना रजिस्टर हो गया, 3 माह करना है, फिर जाके अपने पैसे कुछ ट्रेडिंग 3 माह ये करते रहना है। 1 माह नहीं करवाना मैंने आपको, 2 नहीं करवाना, because to get this new skill going, I'm going to make you do this over and over and over, thousands of times, and then your brain will automatically register this. Now, third is, let me zoom in a little, maybe it'll make more sense. Hello, that every time there's a white line, you see this? This line touches this green line. Green line जा रही है ना, एक green line जा रही है, ये green है ना, ये white line है. No, when this market is closed today, it's Saturday. When that line touches the white, 10 minute, you should click buy. So the rule is, basic rule, you now know every time black will happen, price will change. Number 2, if the background is green, I'm buying. If the background is red, I'm told to sell. All of you have never even studied any of my software yet, but you can at least see 3 things. I'm giving you absolute basics. If it's green, buy. If it's red, sell. When should you do it? When white touches green or white touches red line. That's it. जब white line red पे touch होगी और background red होगा तो मैं sell करूंगा. मैंने आपको पूरे यानी कि 20 साल में एक 30 सेकंड, अभी इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना बता रहा हूं कि इतनी बेसिक्स है, आपको इतने स्लो लेके चलेंगे. And I know what happens is your brain right now is refusing to take this information because human psychology is saying this is goddamn too good to be true. ये कैसे हो सकता है जी? So anybody religious here? जो गॉड पे विश्वास करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी, करते हैं, ठीक है? देखा है गॉड? आपने देखा है? नहीं, और देख नहीं, खुदा को, खुदा का नाम लो, तौबा करो, नहीं देखा ना, तो यकीन क्यों है? किसी ने बताया था, फेथ है ना. So just because you see something new, it doesn't, and you haven't seen it, it doesn't mean it doesn't exist. Yes, your brain has the right to be curious कि यार ये कैसा सिस्टम है जो मैंने पहले नहीं देखा. लेकिन कुछ लोग कहते हैं सिस्टम नहीं सही. मैं कहा यार सिस्टम 100% नहीं है, एक्यूरेसी 70 से 90% पे है, आप उसको फॉलो करें तो ये चलेगा. So same idea. What was our goal? I wanted to pick somebody who has never traded before and make a system ready-made. You turn on the computer, it's ready. I don't have to draw a single line. I don't have to know a lot of this stuff. So I will start to build these alphabets for you. What is the alphabet? A, black line. Alphabet B, this is just an example, by the way, in the course is different. It's software is slightly taught you different. So I have to teach you how to read this. So once you are done, and after those 25 hours of every single line will make sense to you. What is these 2 lines represent? There's a name for it. There's a number for it.
What is this yellow here? What is this black, red? There are 25 products, or you can call it mathematical analysis we have done for you. Eventually, some people take 14 days. Some people take 3 months to learn it. Yes. Once you are done the trial period, so within the trial, by the way, you're welcome to come here 2 times. In person, our office opens at 9 o'clock, no cost to you. Just show up at 9 o'clock. Bring a picnic chair. Why? There's no room here. It's fully packed, people with a lot of different levels and experience, because you just want to experience what the environment is like, right? And you are still skeptical कि यार ये पैसे तो नहीं मैं मांग रहा, आके सिर्फ देखें, experience करें, then decide if this program is worth it for you. By the way, if you sold right here, sell का बटन दबाया या यहां बाय कर लिया, सेल सेल सेल, वाइट लाइन टच कर रही है ना, मैंने जो आपको सिखाया हुआ है, सेल सेल सेल, 3 सेल हो गए ना आपके सामने. होगा क्या? अब मैं आपको इसका उल्टा बता रहा हूं. आपने यहां सेल किया 2:22 में, 2:22, 2:23 में आपके अकाउंट में $150 आ गए. अब आपका दिमाग खराब, मैं सही बता रहा हूं, ये दिस विल हिट यू. अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान है. You will sell again, and then you will sell again, and then you will sell again, and eventually you will go off track and you will join the 97% losers. I will tell you ये ऐसे होगा. हमारा ओपन चैलेंज है. 12,000 स्टूडेंट्स हैं, सारे एक्टिव नहीं हैं, छोड़ जाते हैं, आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं. If you bring me one person, we will do a live stream, open challenge, and just I will ask them a few questions. And if they say, they will end to this conclusion: I am losing money or time based on greed, based on no discipline, based on emotion, based on fear of missing out. मैं 9 बजे आया, 9:40 पे मैंने $150 बना लिए थे. फिर मैंने और ट्रेड किया, फिर मैंने वापस कर दिए, फिर मैंने. So I have people, I have to ask them, to beg them, please get up and leave. Why? They make $200, they give back $500. Then they make $500, then they give back $1,000. I have people who have signed कसमें वादे खाए हुए कि यार आज के बाद ठीक होंगे. और मैं क्या, then that's where my son is listening me inside. He made 10 grand last week, US dollars. 19 साल 18 साल के लड़के के लिए ये क्रेजी अमाउंट है, पागल है. मैं कहता हूं पागलों वाला काम है. एक 2007 में पैदा हुआ, अंडरस्टैंड सारों को लैंग्वेज आ रही है ना. उसके बाद so 18th birthday he bought an account and he says I'm excited. So he went through the same aggressiveness of trading, and then finally by July he calmed down. And I said, all right, now you're going to do it properly. And then on Friday he sent me his record, because he's trading a different market, different style. And I said, you should now come into. So that's Mr. Jatan, by the way. So I told them on Friday on the phone, if you made 10 grand a week US dollar, it's a little scary for me. Why? Because what will happen is now your brain is wired differently. Look at your age fellows at age 18. Somebody's making $20 an hour, maybe to make somebody age 18 and a half, he'll be 19 in January. This is not normal, because what will happen is the brain gets rewired differently. Then tomorrow he will want to make $10,001. And so every day you come in with a target of $200 to $300 a day. That's it. Before we take a tea break now, outside we have tea, coffee, donuts, Timbits, whatever they brought.
That is Mr. Jatin Balla Saab. I know I don't bring in props to impress you guys. Like literally ask anybody. Piche Jay bhai baithe hain sare. These are guys who have results that they can prove. He works for Air Canada, lost baggage, hurt his bag, came in. He's like, I'm interested. A little bit of a trading knowledge. And I said, all right, join us. March, April, May, kind of went through the learning phase. 18 months ago or 9, अब तो 20 महीने हो गए, almost 2 साल होने वाले हैं, जे भाई हैं, कंक्रीट पोर करते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, आप कहोगे यार एयर कनाडा का लगेज हैंडलर और जे भाई जो we have people work in every field, so that you can leave that out of it, that I don't have the background, I cannot do it. कंस्ट्रक्शन वर्कर का ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है? 20 महीने पहले अगर हम उनको कहें NASDAQ क्या है, वो कहेंगे यार हमारे ऊपर वाले ऑफिस में आए के वो कहते हैं यार मुझे नहीं पता, कुछ सीखना है. He came with a passion. He's like, I want to learn, give it time. And then eventually, with him too, 3 months to 3 months, October, he took out $8,500 US. That's his earning capital. He can show you. उससे पीछे 5,000, 3,000, 4. तो एवरेज 5 पे चल रही है, ठीक है. $5,000 US on average he's earning from without $0 investment. And that's the crazy part. ये कहेंगे यार ये zero वाली क्या बात है? So that I will explain you. There are a lot of companies who will pay you. And like today, on Friday, me and him were writing his wise payouts. And I said, he's already up to $8,500 and it's November 15, half of the month ho gaya. Right? So again, the idea is now I'll tell you a story, 2 stories. March, April, May, June, July, August में इनका मुझे टेक्स्ट आया कि यार मेरी ट्रेडिंग खराब हो गई. मैंने कहा क्या हुआ जी? कह रहे यार रोज के बन रहे थे 200 से 300, मैं जरा तेज जा रहा हूं तो वापस कर रहा हूं, ये महीना बुरा जा रहा है. ग्रीड आ गया ना, ग्रीड में फॉलन करके ग्रीड में आए. मैंने इनको एक जवाब लिखा. मैंने कहा भाईजान आप हमारा मेंबरशिप रिन्यू नहीं कर रहे हो. बड़ा रफ आंसर गया ऑडियो मैसेज में. मैंने कहा आप छोड़ दो, मेंटोर हैं हमारे. मैंने कहा आप छोड़ दो, आप ना अपनी जॉब पे वापस जाओ. जो आप कर रहे थे ना, तो इनको बैगेज में मिलता है $300 जो बैगेज. मैंने कहा जब भी वो काम आपके लिए आसान है, ये छोड़ दो, ये नहीं आपसे होगा. That day he figured out, man, the guys are गुस्सा खा गए. Because the idea is, I say, man, you will lose money because of yourself. Don't blame the system. Like, so before last thing, I'll add it to one thing is we have some levels for those that do advanced trading. And I'll pick on this slowly. Okay. We have a mentor office, myself, Mr. Majid, Mr. Jatin, all 3 mentors sit together and do analysts. So he's junior analyst, I'm a junior analyst, Majid bhai is a little bit senior, Happy is senior, he's sitting outside. We analyze our predictions, what gold kahan ja raha hai. And so if you watch for fun, go on our YouTube channel, Content Live. And this is the Friday's full stream we did it for almost 3 hours, 3.5 hours. We started at 9:06. He brought it in, sat down. And at 9:06, there was a trade happening and missed it. And all right, lao ji, sara trade chala gaya ji. Fear of missing out came into the brain. Okay, we have missed the trade at 9 o'clock. We said, all right, calm down. It's okay. Abhi to shaam ke 5 baje tak hum baiठते हैं. Generally, we trade until 12, 9 to 12. Or by the time we were inside our 10:35, 9:35, S3. First trade got done Friday ko. And we predict certain things. And we've been predicting for last 18 years. This is, ये तो सिर्फ 1.5-2 साल का डेटा है. पहले मैंने आपसे ये कहा, मेरे वर्ड्स हैं, जाके सुन लीजिएगा. पहले ही
कि भाई हमने कुछ नहीं करना, 650 पे एंट्री लेनी है। ठीक है, अभी आपको ये नहीं समझ आएगी मैंने क्या कहा है, वेट करें, अभी आपको मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, अभी आप एबीसी भी नहीं सीख सके, आपको कि यार मुझे नहीं समझ आ रही क्या कह रहा है। मैंने सारा, आपने वो लाइव सुना, इन्होंने समय का यार 26,650 पे बैठ जाते हैं, नाइट सेशन लोग को टेस्ट करेगी, वहां से हम बाय करेंगे। पहला ट्रेड वो करवाया, चलो ठीक है, 100-200 बन गए, हर अकाउंट में $300 बन गए। फिर हमने कहा अगला प्लान क्या है, थोड़ी हम एडवांस ट्रेडिंग करते हैं, तो हम नंबर्स पे गेम करते हैं, मैं तो चार्ट भी नहीं देखता यार, जो लोग जय भाई भी सारा काम नंबर्स पे करें। हमने कहा 26,250 पे नाइट हाई, 26,160। जी जी नहीं सर, ऐसे नहीं करें, हमने 3 माइक्रो, उन्होंने 3 माइक्रो हमने लिए, पहले हमने हर अकाउंट में 100 बनाया ना, तो 300 बन गया, वो तो हो गया, ठीक है, पहला वो ट्रेड लिया ना, नहीं नहीं, एक ट्रेड 3 माइक्रो से लिया। हाँ, तो हम आप देखोगे हम नहीं स्टॉप लॉस पे यकीन करते, क्योंकि हमें पता है ना एवरेज से कहां से निकलना है। तो नंबर 1 यहां पर एक ट्रेड हो गया, नंबर पढ़ा दोनों ने चार्ट को, क्योंकि हम लोग प्योर नैस्डैक कर रहे हैं और प्योर हैप्पी वाला कर रहे हैं। 26,150 पर डिसाइड हुआ, नाइट का हाई है, सेल करेंगे। नेक्स्ट मेंटर रूम में आवाज आई कि मैं 26,090 से जा सकती हूँ, मैंने कहा आप जाओगे फंस जाओगे। दूसरा ट्रेड वो लिया, फिर वहां से किसी ने लिए 10 पॉइंट, किसी ने लिए 12 पॉइंट, किसी ने लिए 15 पॉइंट, 3-3 माइक्रो से फिर $50 अकाउंट में आ गए, $250-250 हर अकाउंट में बढ़ चुका है। ठीक है, तीसरा ट्रेड हमने जरा कैलकुलेशन से लिया, हमने पकड़ा पिवट, 26,250 पिवट था, वहां पर मैंने कहा यार अब हमने बड़ा जाना है, 5 माइक्रो से जाएंगे बड़ा। इस 3 ट्रेड लिए फ्राइडे में, इनका पे आउट आया $1,000, 3 अकाउंटों में $300, 1,000 यूएस, 400 टाइम्स 3, $1,200, 80 उनको भी तो देना है ना, 20%, 1,000 $1,000 शाम को आ गया। कितना काम किया है, मैं वहां से उठ गया था 12:30, 12 बजे स्ट्रीम खत्म हो गई थी, 3 ट्रेड, तीनों सक्सेसफुल और $1,000। तो ये आसान नहीं है काम, वो है टॉप 1% में। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास एक ग्रुप है उसमें कोई 20-22 स्टूडेंट्स हैं, वो मैं टॉप 101% कहता हूं अपना। उनके अकाउंट इतने बड़े हो चुके हैं कि वो मिनिमम 5 से 10,000 डॉलर डेली का कर रहे हैं। कुछ एक लेडी है हमारे पास, वो वो कई दफा आपका स्टूडेंट आपसे परफॉर्म अच्छा कर जाता है ना, तो आप कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, सिखाया हमने है, पैसे वो ले जा रहे हैं। तो मल्टीपल अकाउंट्स कर रहे हैं, मल्टीपल फर्म्स कर रहे हैं, मल्टीपल तरीके से कर रहे हैं। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू लाइक, अगर हैप्पी करना है हैप्पी कर लें। अब सो अगेन वी हैव ए ग्रुप, आई नो थोड़ा सा लेट हो गया चाय का, बट वी हैव डू मेंटोर। नहीं नहीं सर, नहीं होंगी कोई गल नहीं। हेलो सर, ये हमारा एक ग्रुप है हमारे मेंटोर्स का, जो आपके साथ बैठेंगे जब आप 14 दिन के ट्रायल आपका फिनिश हो जाएगा। आप अगर ऑनलाइन आना चाहते हो ऑनलाइन आ जाओ, पार्ट टाइम आना चाहते हो, फुल टाइम आना चाहते हो, ओवर टाइम आना चाहते हो, आ जाओ, अपना लंच भी ले आओ और यहाँ बैठ के लंच भी करें, एंजॉय भी करें। वी हैव ए फुल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। सो दिस इज यस्टरडे। Murtaz said, I closed in $450 in profit. Ramnik says, I made $500. Tulip says, I made, udhar बैठते हैं, and MES 65 points. And together we did ourselves. So all mentors, we have 6 mentors for you. They will teach you, they will guide you. I swear to God, एक ही मसला है, आप लोग ओवर ट्रेड कर जाओगे और फिर पैसे वापस करोगे। एक आपको एक टारगेट, प्रॉब्लम अगेन एक ही है, आपको नशा लग जाना इस चीज का। ये मैं अभी बता रहा हूं, आप कहते हो यार ये गुड नशा, ये बैड भी है। मैं, मेरे लिए कर्ज है, मैं गाड़ी में भी हूँ यही काम कर रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ यही काम कर रहा हूँ, बीच में बैठा हूँ यही काम कर रहा हूँ। वो फ्राइडे को अपने ग्रुप्स में मैं पोस्ट कर रहा था, यार कोई हाथ बांध दे आके हमारे,
मार्केट गिरी जा रही थी और हम सेल कर ही जा रहे थे। एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा कि यार आई थिंक आई एम चीटिंग। I said, what happened? He said, I made $5,000 today. I said, wait, give it a like couple of months. आप कहोगे यार enough नहीं बने. So these are success stories. Yes, there's let me tell you a dark story. Somebody got a divorce over this. Yeah, so that's a dark story. Why? No, that's not. No. The idea is because you have to understand. That's okay. How do you translate? It's your thing. It's an addiction problem. So here's the thing. Made one day $5,000, mind gets messed up, and the mind says, I need to do more, right? Mind says, so sold wife's jewelry, sold household electronics. So that trap is, so there's a very fine line between trading and addiction and greed. That's why some communities don't like it, because they say, hey, it is a self-discipline problem. People who do well, and a lot of people, I say, if you can't do yourself, please sit down with somebody and try to do it. Because yes, only 3% will make it. So if there's 100 people in this room, 97 of you won't make it. So if you are the 1% who knows how to handle the greed, how to handle the emotion, how to do, so we'll go for a quick 10-15 minute break. So at maybe 3:30, we will come back and I will answer you how to sign up with companies who will give you the money. You don't have to put in any of your own money. So it's all set outside, please, guys. So stretch for a little bit or. क्योंकि पता क्या है, जो आप ये पे करोगे वही आप ये अगर ये पास होते ये भी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू, अगर आप स्ट्रेटजी नहीं चाहते चेंज चेक करो तो आप कर रहे हो वो नहीं चल रहा है। आप मैं एरियाज करता हूँ, आई डू ब्रेकआउट्स SRES ब्रेकआउट्स ES में करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। I do it ES and SRES ब्रेक करना ना नहीं, आपको वहाँ बैठे हैं ब्रेक कर स्टॉप लगाया होगा ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है। ES पे या ES
ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਉਂਟ ਕਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਉਂਟ ਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸਮਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾ 69% ਤੇ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਈਫ ਨੂੰ
ਉਹਦਾ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਆਲਰੇਡੀ ਐਮਐਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੇਰੈਂਟਸ हाँ चले गए थे दोबारा बताया निकल ही आए अच्छा क्योंकि वेदर मैंने सूट नहीं करता ठंडा वेदर था खराब ह्यूमिड वेदर अच्छा एक ही आगे कोविड से वैक्सीन ने खराब कर दिया वो डॉक्टर मना को तैयार नहीं बहुत होया था ना मैंने वो तैयार नहीं मैं वन ऑफ द पेशेंट है क्या तो डॉक्टर लोग वो एग्री नहीं कर रहे मेरे स्पेशलिस्ट एग्री नहीं कर रहे मैंने दो स्टेरॉइड दे पेपर देते हैं डेली में दो डिफरेंट क्योंकि लंग्स बड़े लो उसमें साइड इफेक्ट चल रहा है तो मेरा लेसर खराब हो गया पूरा साइनस चल गया है मतलब ठंडा मैंने खराब कर रहा है बाहर नी का ह्यूमिड मैंने खराब कर रहा है मैंने मतलब घर के अंदर है डस्ट फ्री होना ह्यूमिडिटी सारे मेरे कमरे की वखरा चल रहा एक मेरे एयर क्लीनर वखरा चल रहा मैं हफ्ते से 2 दिन तो मैं बैठती हूँ मैं कई बार ब्रीथ ही नहीं कर पाऊँ ऊपर थले कर लो बच्चे भी जा सकते हैं कि बस में उन्हें चेक नहीं कर रहा कई बार तो सफाई यार ठीक है हाँ वो तो सब छाटा है तुम की करेंगे प्रोफेसर कैसे हैं Otherwise, sir, every another session, seminar, another dollar, another prop firm. आपने ना पूरा हफ्ता ना पिछले संडे से जो आपने वो शुरू किया ना शायद वीडियो लगी जिसके लिए really good you motivate a lot of people that's it इतना मुश्किल है नहीं है जितना हम बना लेते हैं उसको होना वो कैसे करें फिर नीचे आए किसी के साथ बैठे खुद ना करें किसी के साथ बैठे हाँ ठीक है किसी के साथ बैठ जाए खुद ना करें चलो क्या एक्चुअली मैं फुल 5 तक नहीं बैठ पाऊंगा हाँ नो प्रॉब्लम मैं फिर कभी अगले सैटरडे आ जाए हाँ क्या बस मुझे 10 मिनट भेजना था कि मैं आपको फिर किसी और के साथ कनेक्ट करवाता हूँ तो वो आपको हेल्प करता है आ जाए जी किधर गया जी ये आपको असिस्ट कर देगी सारी ठीक है नो प्रॉब्लम थैंक यू अगर आप मैं स्टैट्स निकाल के दिखाता हूं सिर्फ एक्सपेक्टेड हायर लो पकड़ लेना पूरे वीक में तो अगस्त के स्टैट्स देता हूं सितंबर के अक्टूबर के आप ना ट्रेड डालें और अगस्त सिर्फ जब तक प्राइस एक्सपेक्टेड लो पे ना आए ना करें उसी से अकाउंट भी पास हो जाता है और पैसे भी बन जाते हैं ये जो ओवर ट्रेड है ना ये मतलब इसका हल कोई नहीं है मेरे पास हाँ जी So this is to be done only in the morning. This can no it can be done 23 hours a day I took an account on November the 10th evening account I'll explain you what accounts are no it's 23 hours it's open so and I took an account at 9 p.m. on a November 14th and I made $1,500 in 22 hours trade by trade example by example okay, what software was saying how to enter how to exit how to enter exit and I think I did over that in 22 trades and that all happened in the evening different times of the so you don't have to worry about yeah शाम को बिल्कुल पूरी रात को चलता है गोल्ड जितना अच्छा शाम को चलता है ना और कोई मार्केट ही गोल्ड NASDAQ
या मैं पहले इसका ये है लेकिन ये ना हाँ आप देख पहले मैं गीला इसका All right, let's get started. So, all right, gonna start my session two. Okay, maybe 2 more minutes. All right, so let me get into the session number 2. So I'll get into the round 2 of how and what primary we teach you here at our institute about trading itself has lots of products, options, stocks, crypto, forex. Like I should even write here, forex. So you can literally trade anything. So if you have money, go get into stocks. If you money into options. So futures, I would say stock require, if money had a scale, let's say put 4, like lots of dollars. Options, maybe a little bit.
crypto you're doing. Within trading, we give you the basics of trading futures. So you have to first understand, again, within the language, there are many products. If you go to a bank, say, I have money in my RRSPs or TFSA, they will say, do stocks, long term. So for stocks and options, you're looking at least anywhere from 1 day to 3 months plus. So these are the two products, and they require money. They require a bit of a technical knowledge. They require, meaning that I'll give you some option here. Stocks, I'll put NVIDIA. Everybody has heard about this company, AI company. Let's put a price of $180. $180 is one share of one company that you can invest into. It's stocks. So your TFSA or your whatever the RSP has some funds into it by government that you've been contributing. And let's say you have, I don't know, $18,000 in there sitting, approximately US dollars. You can go and buy 100 shares of NVIDIA and leave it there, and hopefully will make you money. No idea if the price will go up from 180 or will go down from 180, because again, supply and demand, company earnings, many factors that make the price go up and down. A little bit need money, not for you guys at the beginning. Options still need money to understand how options work. You pick something, Friday is the expiry, little complex product, I don't touch it. Beginners, my goal is beginners. So we pick a market called futures. That's why it's highlighted. There's again lots of bonds. You can go bonds, buy government bonds, lose never money because it's generally backed by government. Now, the benefit of futures is this. The market is open 23 hours per day. It's not like a stock market. It's open 23 hours a day. Right now, market will open Sunday at 6 p.m. So this is how a day starts at 6 p.m. and it goes all the way until 5 p.m. That's considered one day in futures trading. So when you're trading stocks, you can hold on a stock for indefinitely until the company does something. Options have generally Friday expiry, and futures trading. So whether you're doing this full-time, part-time, in the evening, early morning. Now, within this time, there are 3 main time zones. You can trade anytime. शाम को 4 बजे होता है ना CID वाला, सुबह के 11 बजे, दिन के 12 anytime trade करे. But there are times. Now, what are those times? 8 a.m. to 11 a.m. This is a very crucial time, meaning this is where the volume is. I'll tell you why. Now, 2 p.m. to 5 p.m. and then 3 a.m. to 7 a.m. These are the 3 biggest time, 23 hours a day, where there's volume. Futures only, because stock market is until from like 9:30 to 4 o'clock, right? They're hoping they will open stock market for longer time too. They're working with exchanges and brokers to make it. Now, let me tell you some hard reality and truth about this marketing. This is a highly manipulated industry. It is highly, how should I say, not volatile, corrupt industry. Very honestly, both corrupt. It favors those
who have money. It's designed towards this whole trading, for whether it's stocks, whether it's options, whether it's crypto, whether it's forex, whether it doesn't matter. Who wins? Who has more money? That's it. So this industry is known as zero-sum industry. What does zero-sum mean in math? We have let's say 50 people here. 50 people इस रूम में बैठे हुए हैं. हर बंदा $100 टेबल पे रखते. ये हर टेबल है, मैं ब्रोकर हूं. यहां पर आप भी 100 जमा कराएं, आप भी कराएं, सारे कराएं. कितने पैसे बन गए इधर? 5,000. लगाते हैं. इस टाइम सेट करते हैं 6 बजे, शाम के 6 बजे हैं, मार्केट खुली है, आप सारों ने $100 रख दिए और 5 बज गए. अगला दिन 23 घंटे गुजर गए, 5 बजने वाले हैं. पता क्या होगा? अब 50 लोगों का, इनके पास 120 हो जाएंगे, इनके पास 80 रह जाएंगे, इनके पास 200 हो जाएंगे, आपके पास 0 हो जाएंगे, आपके पास 50 रह जाएंगे, आपके पास 150 रह जाएंगे. पूरा सम 5,000 ही रहेगा. शाम को 5,000 ही होगा. ये चेंज नहीं होता. सिर्फ लोगों के पैसे पॉकेट्स मूव कर जाते हैं. 97% लोग पैसे दे जाते हैं, 3% लोग पैसे ले जाते हैं. किसी ने भी यूट्यूब पे क्वेश्चन करा, यार कौन बाय कर रहा है तो कौन सेल कर रहा है? बैठे हैं ना, दुनिया में बैठे हैं लोग. So this is how trading works ultimately. One person will lose, so the other person will win. If you have ethics problem, stop it. Don't do it. कुछ लोग कहते हैं, यार, this is a business where I have like moral obligations or ethical obligation. This business is the survival of the fittest. If you go watch Hollywood movies, the best movie is Wolf of the Wall Street. Now, while I'll tell you this, how in animal kingdom, wolves are the worst. I'll tell you why. This is how it happens in trading too. A pack of wolves will hunt together and go and hunt the weakest. But let's say if there's 50 wolves and each one of you is a wolf, we will hunt the weakest one. फिर 49 रह जाएंगे, एक निकल जाएगा. So last time, if there's 5 wolves remaining and there's no food left, they will eat each other. So this is a hard reality of this business. If it bothers you, it's okay. It's your own. You have to understand, every time you earn $1, somebody's going to lose $1. Whether you're sitting here, person is beside you, or whether you're sitting here in Indonesia or Australia, somebody in the global market will walk away with less money because it's a zero-sum game. Traders are robbers, including myself. How good of a robber you are, the better you're considered. How accurately you can rob the market. So I like to always bring that up, that it's an ethical thing. Some people don't like it because, hey, but it is the fastest way to make money, easiest way to make money. If it draws on your boundaries of certain ethics, hey, don't do it. I'm never going to. But I have to truly tell you, so who does win? There is a term called smart money. It's a term. You can Google it. If you have Mike Apple in the morning at 680 News, he's going to say the word. Smart money is in, smart money is out. It's a bunch of computer algorithms who are moving the markets. Bots are moving the market. Institutions are moving the market. So if I have 1.2 million users versus somebody who has 12,000 users versus somebody who has 100 million users, who will win? 100 million guy. So the bigger you are in the market, those wins. What is
So end of the day, 97% lose in this whole, I call it the trading industry. What is my goal? To create the 3%. Together, if we work together and if we have to make sure we can understand certain patterns, we can be part of the 3%. And these 3% work with smart money. If there's a lot of buying, go buy. If there's a lot of selling, go sell. That's where our software comes up quickly and tells you instantly, there's a lot of buying happening, guys, get into buying mode. There's a lot of selling happening, guys, get into selling mode. So we are not buyers, we are not sellers. We, at any given time, we will switch our roles. One day we are buying, next day we could be selling. On Sunday evening, for those that have been doing this for a long time, they already know what will happen on Sunday. In advance, you will tell you price will go up now. Already done, US government is going to open now. It is all manufactured. It is all manipulated. It is all, पहले वो ना ढके छुपे चोरी करते थे, मिल मिला के इनसाइडर ट्रेडिंग. अब तो वो खुले आम करते हैं यार. अब तो क्या क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट में ऊपर जाना है, रेडी हो जाओ. अपने दोस्तों को बता के करेंगे कि यहाँ से मार्केट ने गिरना है, रेडी हो जाओ. वो जो पिछले कुछ दिनों में सारों ने वीडियोस देखी हुई है, बंदा कह रहा है तुमने बिलियन कमाया, तुमने बिलियन कमाया. हाँ, तो मैं यहाँ नहीं कह सकता, लाइफ में हूँ, लेकिन अब वो ना उनको केयर ही नहीं है. हमें क्या केयर है? हम इस पूरे यूनिवर्स का ना एक छोटा सा एक रिटेल इन्वेस्टर है. नियाग्रा फॉल में पानी गिर रहा है, टन पर, लाइक गैलन्स पर माइक्रो सेटिंग्स. हमने वहां जाना है, अपने एक छोटा सा बॉटल उठाना है, उसमें 200, 300, 500, 1000, 2000, 15, जितनी हमारी कैपेसिटी है, क्योंकि whales are moving the market. Smart money is moving the market. We are not big enough to be able to do what they do. They have trillions of dollars at their disposal. हमारा अकाउंट साइज कितने का होगा? 2000 का, 1500 का, 5000 का. बहुत भी बड़ा अकाउंट हुआ तो $8000 का होता है, इससे ऊपर जाते ही नहीं है. But whenever they move, a whale जब खाती है ना, तो जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो छोटी छोटी मछलियां खा जाती हैं. Because this is what we are after. When the big whales move, we just go after this. Because उन्होंने इतनी बड़ी बाइट लेनी है कि मार्केट को गिराना है. 58,000 कॉन्ट्रैक्ट बिका यहाँ पर, हमने उसका एक उठाना है. एक इस मूव में 2:38 तक एक वॉल्यूम आया, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट बिका है, हमने एक लेना है. एक में $50 होते हैं, हमने 58,000 कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना. जितने आप कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा लेते रहे उतने ज्यादा पैसे बनते जाते हैं. But what I'm trying to say is we're going to set a target for $100 to $150 per day. This is futures market basics, very, very basic, very basic. What do we have to do? Job is, if computer is saying buy, stay in buying. If computer is selling sell, stay in sell. And for the since 2008, we've been teaching one method: green to buy, red to sell, green to buy, red to sell, green to buy, red to sell. It hasn't changed. Today there's a class today from Danielle. उन्होंने अपना कोर्स तो नहीं चेंज किया. 2008 में हम अपनी स्ट्रैटेजीज में नहीं बदलते. उन्होंने आज भी यही सिखाया है. क्या लिखा हुआ जी? बुलिश है तो बाइंग करना है ना. कहाँ से बाई करना है? यहाँ से. 70% आपका रिजल्ट ठीक है और आपको पैसे बनने शुरू हो जाते हैं. मैंने एक अकाउंट लिया नवंबर 10 को, रात को एक एक ट्रेड का रिजल्ट भेजा है. मैं पूरे को, लोग कहते हैं हमसे $100 नहीं बनते. मैं कहता हूँ यार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ. ये टेलीग्राम का ग्रुप है. Where is it? Right here. Where did it go? Sorry. That's my dad. Happy. SuperAreas, Calgary areas. Yeah. Okay. Going to go back to November 10th.
10th November, 9 p.m. 9:41, 42 as a test. So what you guys will be doing after the 14-day, this is your roadmap, by the way. So what's your roadmap? 14 days. So if conditions as an engineer, yes, I like it, continue. No, I don't like it, uninstall the program. Thank you very much. I hope you had good time. That's it. Nobody's going to call you. Nobody's going to email you. It's all automated. That your membership. If you say yes, we take you on a 3-month program. Within 3 months, we start teaching you some basic stuff in person or online. So your job is to trade with somebody else's money. And this is where the firm is called funded account. So the whole, I will never, ever ask you to put in $1 of your own money. So I'll put in number here. I'll put in a number here. There's a company called Take Profit. It's a company. It's a US-based company. The banner is on our website. Right here, if you go on SuperAreas.com, we're affiliated with them. We promote their products. So right here, we're affiliated with lots of companies. At the bottom, there's banners right here. So let's pick Take Profit. Company is $90 they will charge you, 90 USD. So November 15th, I'm not gonna put 14 days, but I'll assume you have done everything. You've done the videos, you've done 1 or 2 weeks of work, and you are ready to now trade. And you say, I want to make some money now. I understand how to use the software. I want to take this for a test drive. So you got your G1, you got your 2, you are now ready to purchase a car. But I said, don't put in your own money. Let's put in. So I will assume November 15th to December 1st trial, December 1st to January 1st experience, demo money, fake money, not real money. You can get demo money inside. It's called paper trading. Paper trading. January 1st or 2nd, you decide, all right, I'm comfortable. I would like to now attempt with the real money. Okay. You will spend on January 3rd, whenever the market opens, you buy an account. It will cost you $90 US. Okay. What do they want to get out of you? They will open up an account and they will say, make some money. You haven't invested any of your own money. You haven't gone to a bank to open an account. You're not broker, interactive broker, Questrade, Wealthsimple, zero, nothing, no real money. You will pay them through credit card, maybe $90. Sometimes so the cheapest I've seen them sell for a $16 company called Bulldogs. But they range from $16 to $100. $650. There's different types of accounts you can buy. I buy this account. What do they want to see? In 1 month, can this person trade futures? What they will open up an account for you and they will say, you have a starting number, 25,000. You can set up any number, 25,000, 50,000, 100,000, 150,000, doesn't matter. But they just say, all right. So it's an account, like a live account, like a real account, like a true loss. And they will give you some conditions. Please don't lose $1,500. If you lost $1,500, your account, you have failed the test. It's a test, by the way. So you are given 30 days to complete an exam without your money. Everybody with me so far? आपका ट्रायल पूरा हो गया. नवंबर 15 से स्टार्ट किया था, 15 नवंबर से स्टार्ट किया, 15 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक समझ आती है यार कि मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है जी.
यस किया, प्रोग्राम में एनरोल कर लिया, 1 माह इन पर्सन आ गए या ऑनलाइन देख लिया, हमें हमारे साथ जुड़ गए ना, हम करते क्या है, बात क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या बात कर रहे हैं, EAPA फंडेड, ये लैंग्वेज सीख ली। 2 जनवरी को आप कहते हो यार मैंने अब पैसे भी तो कमाना इसमें से, कुछ देख तो लिया, समझ आता है, तो आपको हम एक अकाउंट खोल के देंगे इस कंपनी के साथ, टेक प्रॉफिट, हमारी नहीं है, US की कंपनी है, उसमें आपने अपने क्रेडिट कार्ड से $90 स्पेंड किए, कोई बैंक नहीं गए, कोई वायर नहीं किया, कोई जमा नहीं कराया, आपका एक अकाउंट खुला और उस अकाउंट में एक मनी है $25,000 का एक वैल्यू है, ये आपके पास आने नहीं है और ना ही जाने हैं। साथ ही उन्होंने कुछ कंडीशंस लगा दी आप पे। ओके, सो एवरी फर्म दैट वी आर affiliated with, how many firms we are affiliated with? Take Profit, Purdia, Apex, Tradeify, Trade Day, Legends, Lucid, Funded Next, Prop Shop, Phidias, Bullnox, FTMO, and more. These are just 10-12 हैं. They all are ready to give you free money. But first, they want you to make sure you can trade. अब मैंने आपको हायर करना, मैंने कहा ठीक है जी आपको हायर करते हैं, तो लेकिन पहले आपका टेस्ट लेंगे ना, आपको ट्रेडिंग करनी आती भी तो है, ये डे ट्रेडर हैं। So how this works is 1 day is considered 6 p.m. to 5 p.m. That's 1 day. So they will give you 30 days. You have opened up this test. Now you have to pass this test. So that's it. Simple as that. There's no complications to it. They have 5 conditions. Number 1, make $1,500. 25,000 का अकाउंट स्टार्टिंग है, खत्म करना है 26,500। एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया ना, आपकी रेस है 1 किलोमीटर की, आपकी रेस है 200 मीटर की, आपकी रेस है 5 किलोमीटर की, आपकी रेस है मैराथन, रेस में टेस्ट करना है ना, तो पहले आपकी कंडीशन इस कंपनी ने लगाई कि 1500 बना के दिखाओ, ठीक है। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये लगाई, यार आपने 1500 से ज्यादा पैसे लूज नहीं करने, नहीं कि अगर आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो तो 1500 लूज हुए तो आप कंसिडर बैड। तीसरी कंडीशन, एक दिन में 750 से ज्यादा नहीं कमाने, ये कंडीशन है। कुछ लोग आते हैं दिन में 10,000 कमा लेते हैं, दे से नो नो नो, वी वांट टू मेक श्योर don't make more than $750 in a day. They have a condition called consistency condition. Fourth condition, make sure you close all your trades by 4:45. एक कंडीशन है, फिर खोल लें 6 बजे, फिर खोल लें। 23 को कह रहे हैं 4:45 पे बंद कर दें यार, ट्रेड के दौरान ना करें, 4:45 से 6 के दरमियान, और फिर दोबारा खोल लें ट्रेड। सो ये 4 कंडीशन है जी। लुक्स इजी ऑन पेपर, जाएंगे ना लग पता जाएगा यार ये तो मुश्किल है, लेकिन अपने पैसे नहीं लगाने। Now a new trader who comes with us says, okay, I've learned the software, I can trade, and they're ready to put in money into a real account. I will say, please run away. I'm not going to let you put in money in the real account because the market are so crazy, volatile, you can lose money in a heartbeat, right? So I have to teach you all of this in a controlled environment. It's called the demo or funded environment. So this is the goal. You can trade 23 hours a day. सुबह करें, शाम को करें, हजारों ट्रेड डाल दें, उनको परवाह नहीं है, बट ये 5 कंडीशंस हैं। वैसे ये नहीं 5वीं कंडीशन ये थी कि 30 दिन के अंदर इसको चौथी और 5वीं को मिक्स करते हैं। 750 a day, so you're really 5 minimum days. It's kind of merged together. So if you made 750, you cannot complete the test before 5 days.
So if you started, so really you have 30 days, condition one, number one, 30 days to complete it. ये आपका टेस्ट है. That's it. आपका अकाउंट खुला, आपको ट्रेडिंग आ गई. पहले आपने बेसिक सीख ली, ग्रीन टू बाय, रेड टू सेल है, ब्लैक होगी तो ये होगा, ये कलर इससे हो गया. पहले तो आपको ये सिखाना है ना, ये सिखाना है पहले. ट्रेडिंग तो बाद की बात है. पहले आपको ये तो बता दूं कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है. यही नहीं आता तो ये कैसे आएगा. लोग पहले ये खोल लेते हैं, फिर ये कहते हैं. मैं कह रहा हूं आपको अभी राइट क्लिक नहीं करना आ रहा और आप कह रहे हो कि मैंने ट्रेडर बनना है. तो पहले आपको, मेरी एक वीडियो है यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे 2.5 घंटे की, इन द कोर्स राइट हियर. This video is 2 hours long. It tells you how to use my software, how to buy, how to sell, how to open position, how to close position, how to use the environment. आपको लैंग्वेज सिखानी है पूरा, A, B, C, D, 10. So this is, don't do this for at least a month and a half. पहले उसको सीख लें, मेंटर के साथ बैठ लें, इन पर्सन आ जाएं, ऑनलाइन सीख लें, क्लासेस पे क्लासेस लगी हुई हैं, ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, हाउ टू यूज इट. एंड देन बिकॉज इफ आई आस्क यू इन द मॉर्निंग, दिस इज हाउ द फॉर एडवांस्ड द ट्रेडिंग ब्रीफिंग goes. Our CEO in the morning will read certain things. Today gold की ये पोजीशन चल रही है, NASDAQ ये चल रही है, क्रूड ऑयल ये चल रही है, फॉरेक्स में ये चल रहा है. हम मार्केट, क्योंकि हर तरह के हमारे पास अकाउंट साइज है, $10 से लेके $10 मिलियन का है. हमारे पास एक बंदा ट्रेड करता है $4.4 मिलियन यूएस का अकाउंट. उसने $43,000 निकाला एक दिन में. अकाउंट साइज बड़ा है ना, पैसे बड़े हैं तो ज्यादा लॉट ले लेगा, ज्यादा बड़ी स्विंग ले लेगा. छोटे से अकाउंट में तो $100 से $150 रोज का निकलता है. So once you do this, they will hire you. So there's companies that I try. So let me log in here, PHI. This is my results. PHI. This is a new company I'm doing. Every day there's lots of companies who say exam lane, test lane. So I signed up with them. So I bought their account. So what was the test? This I had to make in 30 days $9,000. Okay, टेस्ट है ना, टेस्ट लिया, फिर मुझे हायर कर लेंगे, फिर मुझे कैपिटल मिल जाएगा. मैंने टेस्ट पास किया, मैंने टेस्ट लिया ये वाला सब्सक्रिप्शन अकाउंट्स. So I posted in my status. Give me 1 second. और अब दो PHI ये पूरा उसको लेके चलते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग से ये काम होगा, उससे पहले नहीं होती. All right, so remember, congratulations. So on 2 days ago, they said, congratulations, you have passed my challenge. We gave you a target. What was the target? मेरे अकाउंट में उन्होंने मुझे यूजर नेम पासवर्ड दिया और उसमें $1.5 लाख थे. उन्होंने कहा यार इसको कर दो $1,159,000, $9,000 बनाने थे. ठीक है, ये मेरा टारगेट था 9,000 का. और मेरा जो लॉस एबिलिटी थी, इधर 1,500 है ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि -4500 नीचे नहीं जाना. अगर आपका अकाउंट -4500 हुआ तो आपका अकाउंट, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा. ठीक है, टेस्ट लिया, मैंने कहा ठीक है कंपनी अच्छी है. सो व्हेन डिड आई बाय द टेस्ट? सो आई बाय द टेस्ट ऑन पेमेंट रिसीट. सर मैंने अकाउंट, ये देखें, ये मैंने अकाउंट लिया $224 का. ठीक है, तो महंगे अकाउंट भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं है. तो ये अकाउंट है, इसको मैं जूम इन करता हूँ. ऑन so I paid on November 10th, I bought the account. And how much did I pay? I paid $224. ठीक है, पे कर दिया.
अब मेरे पास 30 दिन है, 30 दिन में अकाउंट बैलेंस को लेके जाना है यहां से यहां तक। टारगेट है 9,000 का और नेगेटिव नहीं जा सकता 4500। अगर मैं फेल कर गया, I lose 225 because that's what my stake is in the company, right? I've given to write the test $225. Here you will give $90. So three things can be possible. First thing is you pass. यही होगा ना, या पास करोगे या फेल हो जाओगे। और एक तीसरा आउटकम भी होता है, इनकम्प्लीट और रोल ओवर, वी कॉल इट roll over. If you pass, you will hired by them as a contractor. If you fail, you have lost $90. What are the failing conditions? आपके 1500 जाया हो गए, 1500 जाया हुए ना, और या आपने क्लोज ट्रेड नहीं किया, ये इन दो चीजों से फेल होता है बंदा, या 1500 जाया हो जाए या आपका ट्रेड खुला रह जाए 4-5 बजे, ये रियली 5 बजे का रूल है, ये दो चीजों से आप फेल करते हो। तो अगर पास हो गए तो आपने टारगेट पूरा कर दिया, अगर फेल हो गए तो या आपने 1500 लूज किया है या आपने 5 बजे ट्रेड बंद नहीं किया था। कई लोग ट्रेड खोला, अकाउंट खोला, बट कुड नॉट कंप्लीट, सिक हो गए, शादी पे चले गए, कहीं अपॉइंटमेंट आ गई, so they will charge you another $90 and give you another 30 days. So वहीं से कंप्लीट। लेकिन मैं किसी को नहीं रेकमेंड करता कि रोल ओवर में जाए, या खत्म करो या पास करो या फेल करो, तीसरे की जरूरत ना करो। इतना कौन सी $90 ही देने हैं तो अगला टेस्ट ले लो, उसको फेल करके, क्योंकि उस अकाउंट में रह जाते हैं $200, आप कहते हो यार अभी मैंने 1500 भी बनाना है, इतना बना, उसको फेल करके अगला ले लो, एटलीस्ट टाइम तो स्टार्ट नहीं होगा। सो आई नो इट्स डे 1 के लिए जरा too much information आ रही है, a lot of it won't make sense, don't worry, it will, all of it will make sense eventually. So here's my test. I took the test for $224. They gave me a target, make $9,000, don't lose 4,500, and you are passed. So I posted all my results daily on my groups, and yesterday they sent me an invitation. They said, all right, on 5 days it took me, and they said, you have passed the test. We will hire you as a trader. Okay, good. What do I have to do now? Round 2 है ना? In round 2 of this company, I have to make half of this target. So the moment, so account starts again. My account size is $150,000 again. Where is the account? I didn't trade anything today. Let's click on my accounts. So again, I have $0. So now what is my target? $4,500. Round 2, there is no time limit. I don't have to complete in 30 days, but I cannot complete. Hey, Sunny, how are you? Because you can come in here or anywhere. So in round 2, you have less pressure. I can take 30 days. I can take 90 days. I can take 100 days. There's no cost, by the way. They're not charging me again $225. I already paid. आपने G1, G2 का टेस्ट किया था, आपने G1 में ही G2 के पैसे दे दिए थे। ऐसे ही होता है ना, G1 और G2 कब जाके किया आपने? G1 फॉरन कर लिया, G2 के लिए 8 माह वेट करो। अब मुझे उन्होंने फिर अकाउंट बैलेंस दिया है 1.5 लाख का, और उन्होंने कहा है इसको कर दो 154,500. Okay, that's it. That's all I have to do. No time limit. I can take 5 days, 6 days, 9 days, 100 days. Now look, I planned every single thing in life. Again, psychology more, plan it. Every time, nobody just gets up and does something. I like to plan my things. Plan my things is, my target is
I have to go on a vacation, plan it. You have to get into a school, plan it. Do a skill, plan it. With the planning, you can achieve then you can plan your day, plan your month, plan your everything step by step, and getting to that goal becomes easier. Now, what is my plan? I have to make $4,500. How much will they give me when I reach this target? $2,750, half of it almost. So that's what they will reward me. अब यहां पहुंचना है. मैंने कहा यार मैं पहुंच जाता हूं 60 days में. This is 3 months, by the way. Trading days are 20 in a month, 20, 40, 60. Let's say even 2 months. How much time I have in 2 months? If I have to divided by what? 40 days. अब हिसाब कर लें जी, 4,500 divided by 40. That's $100 a day यार. मेरी एटलीस्ट कैपेसिटी इससे तो ज्यादा ही है ना. तो मैं कहता हूं मैं रोज के $200 से $300 निकालूंगा इस कंपनी में. $300 आपसे ना निकले ना, मैं आपको इतनी बड़ी गाली देता हूँ कई दफा कि आपको कहता हूँ यार आपसे 300 नहीं निकल रहे. ये तो बड़े अकाउंटों में है, छोटे अकाउंटों में $50 कहता हूँ पीए के अंदर कि यार समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग इफ यू कैंट मेक $100 to $150 a day. So what will happen when I reach 4,500? So now यहां से भी दो चीजें हो सकती हैं. अब कोई तीसरी चीज, यहां से मैं पास कर सकता हूं और यहां से मैं फेल कर सकता हूं. अगर मेरा नुकसान हो जाता है, मेरा $4,500 खत्म हो गया, मेरा नुकसान हो गया, गलत ट्रेड कर दी, पैसे जाया हो गए, तो मेरा टेस्ट फेल हो गया. ठीक है, मेरा कितना नुकसान हुआ है? $225 का. ठीक है, अपने पैसे तो नहीं लगे ना. मेरा तो रिस्क 225 का है ना. अगर आपने इधर फेल कर दिया है, आपने 1,500 तो लूज नहीं किए है ना, $90 लूज किए हैं रियलिस्टिकली. तो करें भाई, आ जाए बैठे. सो दिस इज हाउ these companies work. Some companies have a 1-round challenge. Some companies have a 2-round challenge. Some companies have a 3-round challenge. Basically, there are hundreds of companies out there, which is the top 10 we have listed, who are giving out money left, right, and center. So a company called Bullnox. So I pick a challenge. $100 का इनका challenge था $35 का. Because I have a lot of guys who are messing up, who are saying, यार हमसे $100 नहीं बन रहे, हमें क्या करें? मैंने कहा ठीक है, वेट करो. मैं आपके साथ बैठ के तो नहीं ट्रेड कर सकता, मेरा अकाउंट्स डिफरेंट देख रहा हूं. November 10th के टेलीग्राम के ग्रुप में मैंने जाके एक अकाउंट खरीदा. उसका ये वाला अकाउंट, ये अकाउंट मैंने लिया $36 का, डिफरेंट कंपनी, सेम अकाउंट, 25,000 का है और 1,500 का बैलेंस है. और मैंने उसको मिनी में ट्रेड किया, ES में ट्रेड किया. एक भी ट्रेड NASDAQ का नहीं. एंड पे जाके मैंने कुछ, और मैंने अगर आप देखें ट्रेड, मैक्सिमम पॉइंट उठाए हैं तो 3 उठाए मैक्सिमम. पहला ट्रेड डाला और मैंने आपको ट्रेड डालते हुए बता दिया कि मैंने यहां से ट्रेड लेना. चार्ट्स आपके पास भी हैं, सब कुछ आपके पास है. एंड देन आई शोड रिजल्ट्स बाय रिजल्ट्स, ट्रेड बाय ट्रेड, और मैंने अपनी एंट्रीज के साथ आपको ट्रेड दिए हैं. गिव मी अ सेकंड, समवेयर अराउंड हियर. So this was day number 1. I took 5 trades. 10 बजे मैंने अकाउंट खरीदा और रात के 12 बज रहे हैं इस वक्त. ये मॉर्निंग सेशन नहीं कर रहा, बिल्कुल डेड सेशन कर रहा हूं, गोल्ड भी नहीं कर रहा. मैंने पहला ट्रेड लिया $50, दूसरा ट्रेड लिया $50, तीसरा ट्रेड लिया $50, चौथा ट्रेड लिया $50, पांचवा ट्रेड लिया 50.5 पॉइंट. मैंने सारे स्क्रीनशॉट्स भेजे. मेरी ये एंट्री है, मेरा ये SL है, मेरा ये TP है. इन TP स्टैंड्स फॉर टेक प्रॉफिट, SL स्टैंड्स फॉर स्टॉप लॉस. स्कैल्पिंग इसको हम कहते हैं. ट्रेड में गए,
थोड़ा सा बैठे, 5 मिनट बाद पहले दिन $287 कमाए, मन कर दिया ठीक है कल देखेंगे भाई। हालांकि मेरे पास 30 दिन है, अगर आप रोज के $100 भी निकालें, 2 पॉइंट लें, तो आप ये काम 15 दिनों में कर जाएंगे। अब हो यहाँ क्या रहा है, ऑफिस में बैठा हूँ, मेंटर्स मुझे रोज कहते हैं यार भाई बैठे थे सामने, 400 हो गया है, नहीं हट रहे, मैं एक ट्रेड और ले लूं, मैं एक वहां पर वो 400 दे के सारा वापस दे रहे हैं, क्योंकि गलत हो रहा है। पे आउट अप्लाई कर दिया है, हाँ 410 बन गए हैं, मैं- 500 पूरे हो और उस ऑफिस में कसम एफिडेविट खा के गए हैं आपके। अब एक बंदे ने शाम को, आपको पता है कि $600 आ जाने हैं अकाउंट में, सिर्फ एक बटन दबाना है, नहीं रुक रहे ना, तो फिर ठीक है, इट्स ओके, मुबारक हो, मैं आपको मुबारक देता हूँ। मिठाई बट गई फिर, निकाल के तैयारी। हाँ फिर बारात ही नहीं आई ना। हाँ क्या? ये रे बकायदा अकाउंट लगा के दिखाया यार, ये रेड है, मैं लॉन्ग में हूं, कहां से, एक उसकी डाइवर्जेंस ट्रेड से $87 बने हुए हैं। एक एक अकाउंट को एक एक सिंगल शॉट से दिखाया कि मैं अगर लेने लगा हूं ट्रेड, ये सुबह के 7 बज गए जी, ये आ गया 11 नवंबर। 11 नवंबर को थी बैंक हॉलिडे, दुकानें बंद थी, ऑफिस बंद था, मैंने कहा यार अकाउंट को चलाते हैं। सुबह 7 बजे एक ट्रेड लिया $112 का, ठीक है, फिर मैं एक एक ट्रेड लिखता जा रहा हूं कि यार पहला मैंने कैसे ट्रेड लिया, पहले मैंने ट्रेड लिया मिड बैंड ट्रेड, दूसरा मैंने ट्रेड लिया रिवर्सन डाइवर्जेंस का, तीसरा ब्लैक कैंडल, चौथा ये एरिया ट्रेड। एक दिन के सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं आ चुका हूं अगला ट्रेड आ जाए। फिर वी आर अप टू $475। क्या टाइम हो गया है, सुबह के 10 बज रहे हैं। फिर अगला ट्रेड लिया 112 के बाद $75। अपॉर्चुनिटी देखता जा रहा हूं, ढूंढता जा रहा हूं कि यार सॉफ्टवेयर ये कह रहा है यहां से ये करना है मुझे, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, हमें तो 15 के 15 मेथड ज्यादा है, आपने तो एक पकड़ना है उसमें से एक और। अच्छा फिर स्क्रीनशॉट, अगर यहाँ प्राइस आएगी तो मैं ये करूंगा। तो जो लोग एडवांस ट्रेडिंग में चले जाते हैं, फिर मैं एग्जैक्टली बता के किया कि मैंने यार यहाँ क्यों ट्रेड लगाया है, मेरा एसएल क्या होगा। फिर एडवांस बताया कि ये ब्रेकआउट ट्रेड होगा तो ये यहां से मेरा ब्लैक कैंडल बनेगी। अच्छा जी, लाओ जी, क्या टाइम हो गया है, सुबह के 10 बजने वाले हैं, हम आगे ऑलरेडी आ गए हैं $537 पे। उस 75 के बाद अब ये नहीं हो रहा कि मैंने ट्रेड डाला, फिर ट्रेड डाल दिया, फिर डाल दिया, फिर घंटे घंटे का गैप आ रहा है बीच में, 2-2 घंटे का गैप आ रहा है। ये मेरा चार्ट ही नहीं सेट हो रहा, मुझे जब तक अलाइनमेंट नहीं आएगी मैं क्यों ट्रेड डालूंगा, रैंडमली तो नहीं घुसना ना। फिर एक ट्रेड लिया $62 का, मैं 1500 के अकाउंट में मिनी कर रहा हूं, कोई माइक्रो नहीं कर रहा, ई है ना, जब मिनी माइक्रो करता हूं जब मैं पीए में आ जाता हूं, ठीक है। लो सुबह के 10 फिर बजे, एक और अपॉर्चुनिटी क्या बन गया जी, राइट कैंसिल, 10:41, वी आर अप टू 787। यार कोई मेरा ट्रेड $50, $80, $50, 112, 562, स्लो एंड स्टडी चलते चलते थोड़ा सा इधर से लिया एक ट्रेड, एक करते करते, सिर्फ अकाउंट बताने के लिए कि यार बिगिनर भी हो ना, 1-2 पॉइंट निकालता जाए तो इतना मुश्किल नहीं है जितना आप, बहुत सारे लोग ना इसको बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। अच्छा एक ट्रेड में मैं फंस गया और मैंने कहा कि देखिए मैं आपको इस ट्रेड से निकल के दिखाता हूं, हमारे जो थोड़े से एडवांस यूजर्स हैं ना वो इसको समझ पाएंगे। लाओ जी, ट्रेड आया और मैं ट्रेड में चला गया हूं एरिया ट्रेड, एरिया ट्रेड में एक्सपेक्टेड हाई में आ गया, 67 से सेल किया। अब रेंज इतनी बड़ी थी वो नहीं रुकी, एक मिनी है, मैंने उसको प्लान किया, मैंने कहा वेट करें कि
कहाँ पर एरिया ट्रेड आया है? एरिया ट्रेड की भी फोटो दी है, बकायदा फोटो दी है। यस सर, कि मैं 67 से इन हूं, मैं 77 से एक और लॉट फेंकने लगा, अपर रेंज से एक और लॉट फेंका, मिडिल में आके एवरेज की, ब्रेक इवन पे निकल आया, राइट? ब्रेक इवन पे कोई इसमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ये बकायदा लिखा हुआ जी कि इन एक ट्रेड में अच्छा, वी आर अप टू $1295 करते करते 87, 50, 50, 50, 112, कहाँ मैंने $500 कमाया? नहीं कमाया यार। एंड 7:29 PM I completed the test. जो काम 30 दिनों में करना था उसको प्यार प्यार से आप एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिजर्व होके पुल बैक करके देखें यार ये मेरी एंट्री बनती है नहीं बनती। Whenever in doubt, there's no trade for me. So अब ये रिजल्ट्स हैं फ्राइडे के, ठीक है? प्रॉप शॉप कर रहा हूं, एक सिंगल डे का ट्रेड $6,000 का है, एक दिन का। ये बड़े लॉट्स में कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसका टारगेट बड़े हैं ना, जो बड़े अकाउंट्स हैं उनके टारगेट्स बड़े हैं। सो I managed to do 40 accounts at a time, but again, I've been doing this 5 years, right? So I can manage with multiple machines. Most people trade with 3 to 5 accounts at the same time. क्योंकि अगर आपके $100 एक अकाउंट पे बनेंगे तो 500 5 में बन जाएंगे, 200 बनेंगे तो 2 अकाउंट है तो 400 बन जाएंगे। जतिन भाई के 3 अकाउंट है, एक अकाउंट में 300 बने, 400 बने, 1200 शाम को ले गए। सो इतना मुश्किल नहीं है अगर आप उसको एक स्ट्रैटेजी मास्टर कर लें। फिर आती है कंपनी वाइस। मोस्ट लोगों को नहीं पता कि वाइस क्या है। इट्स अ फ्री बैंक, free account bank. It's not a bank, it's an account management company, right? So you can log in and here's my account. I will log in and I will show you my account, right? So take profit. Oh, अब उससे पहले पर्डिया पे आ जाते हैं, एक और कंपनी है पर्डिया कैपिटल, pays you daily. 12 नवंबर को कितने पैसे उन्होंने भेजे? 760, 750, 730। मैंने पूरी जर्नी डॉक्यूमेंट की और पूरी जर्नी अपलोड की कि कैसे बनते हैं। टेक प्रॉफिट। बारह नवंबर को 4000 भेजे, 3 नवंबर को 1150, 29 नवंबर को 5300, 22 के मैंने रिजल्ट शो किए। इतना एग्रेसिव हम लोग खेल रहे थे कि हम कह रहे थे यार बड़े अकाउंट है ना 1.5 लाख के, तो आप 2 मिनी से जाते हो, 13,250 का यूएस। फिर उससे पीछे लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मनी इज देयर, गेट दिस स्किल, डोंट गैम्बल, डोंट ओवर ट्रेड, स्लोली कोई भी बिल्ड कर लेता है। 3% जीत जाएंगे, 97%। तो ये कौन से किसके पैसे मुझे आ रहे हैं? जो 97% लूज कर रहा है। किसी ने कहा प्राइस ऊपर जाएगी तो किसी ने कहा ना प्राइस नीचे जाएगी, एक जीत रहा है ना। मैंने सुबह अभी कहा था कि अगर 5000 यहाँ पड़े हैं, आप कहें प्राइस ने ऊपर जाना है, आप कहें ऊपर जाना है, 51 लोग जीतेंगे ना, तो 49 के पैसे इधर मूव हो जाएंगे। तो कोई ना कोई तो हार रहा है ना बाहर, जो एक जीत रहा है। तो सिर्फ 100 में से 3 जीत रहे हैं और हमने आपको उस 3 का हिस्सा बनाना है। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप मेरे कंपनी का हिस्सा बनेंगे तो आपको भी इस तरह के पे आउट्स आएंगे। मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप फॉलो करें। एंड अच्छा, फिर रिजल्ट्स इस तरह आते हैं हमें। लेट्स से कि डन, सिर्फ एवरी डे माय व्हाट्सएप गेट्स फुल एंड पीपल से डन। कितने पॉइंट्स? नेट पीएनएल ये था 737, $200, $300, $50, $500, $1000। So you find me a business that requires no money of your own. You find me a business that requires this much intelligence and basically ये मैंने इनको लिखा, मैंने कहा आप देखें जी, मुबारक हो आपके। इन्होंने मुझे कहा कि
मेरा अकाउंट साइज 25,000 का है और इस वक्त उसमें हो गए हैं 26,999। मैंने कहा शाम को $500 ले जाएंगे, तो कितने पैसे खुद लगे। तो अब अगेन यकीन नहीं आता ना यार, कौन मुझे पैसे देगा, इतनी फर्म्स यार, आपको सिर्फ उनका टेस्ट पास करें और उनके साथ हायर हो जाए। So this is how the funded program works with few different companies. They allow you to, now I'm doing, अब जैसे ये whenever my balance goes from 150,000 to 154,500, तो मुझे $2700 आ जाएंगे। मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी, $225। That's it. If you're struggling, sit with somebody. जी जी कंपनी है सर, इसमें कोई फ्रॉड भी चल रहा है? सर, एक पिछले 5 सालों में एक कंपनी भागी है। कंपनी का नाम है फास्ट ट्रैक ट्रेडिंग। यूएस की फ्लोरिडा की कंपनी थी। तो वो आए और उनके रूल बहुत आसान थे, तो उनको लोगों ने, लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। अब मैं आपको इसका भी बता देता हूं, ये फंडेड कंपनियां चलती कैसे। जितना बड़ा स्कैम ये फंडेड कंपनी है ना, लोगों को मालूम नहीं है। क्यों? 97% तो फेल कर रहे हैं ना, लूजर्स हैं। वो कहते हैं कि एक बंदा आया, लेट्स से आप सारों ने, आप यहाँ पर 100 बंदे बैठे हो, आपने $90 दिए, आपने भी 90 सारों ने 90 दिए, मेरी फंडिंग कंपनी, ठीक है, मैंने आपसे $9,000 ले लिए। अब मुझे पता है कि सारों ने पार ही करना, वो तो 90 मेरी जेब में आ गए ना। तो ये फंडेड कंपनियां इस तरह चलती हैं, ये कोशिश करती हैं कि आप टेस्ट फेल कर दें, क्योंकि टेस्ट की तो कोई कास्ट नहीं है ना, उन्होंने कौन सी अपनी जेब से देनी है। आपको एक फेक अकाउंट खोल दिया, उसके अंदर आपने ट्रेड किया। अब इमेजिन करें आपने 90 जाया, आपके तो 1500 नहीं गए पर 90 गए, फिर आपने 90 डाले, फिर 90 डाले, फिर 90 वो करते लगे, आप पता लगे 2-4 हजार फंडेड कंपनियों को दे गए। सर हो जाता है, एक वो रेशो कम है। अभी तक हमारे पास एक कंपनी है जो बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो गई, फास्ट ट्रैक ट्रेडिंग। वो बल्कि मुर्ताज भाई आए, याद आ गया, $35,000 उन्होंने मुझे नहीं दिए, कोई 40-50 हजार उनके, हमारे ग्रुप के, क्योंकि हमने उनका टेस्ट पास कर लिया था और हम 1 वीक लेट हो गए थे। उन्होंने हमसे पिछले बैच को दिया, हम जरा थोड़े से लेट हो गए ज्वाइन करने में, तो वो कंपनी लिक्विडेट हो गई। उनके पास इनफ पैसे नहीं थे देने के लिए टेस्ट के बाद। तो हाँ, ये डिनाई करते हैं, एक कंपनी एपेक्स है, डिनाई करती है, लेकिन उसके रूल्स आपको बताएगी कि हमने क्यों डिनाई किया। मैं आपको डिनाई की बात करता हूँ, एक सेकंड। ये कंपनी है फिडियस, राइट, सॉरी, प्रॉप शॉप, ठीक है। मुझे उन्होंने एक मेरे अकाउंट पे फ्लैग लगाया कि यार हमें तुम्हारे सिस्टम से अलर्ट हो रहा है, तुम गैम्बलिंग कर रहे हो। मैंने कहा यार क्या हो, उसको एक वर्ड होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज ट्रेडिंग के अंदर। मैंने उनको जवाब दिया, उन्होंने मेरी अपील अप्रूव कर दी, मीनिंग कि अगर आपको कोई आता है, रिजेक्शन का लेटर आएगा कि आपको पैसे नहीं देंगे, कोई रीजन देंगे ना। 5 कंडीशन में कोई रीजन है, यार आपने ट्रेड खुला छोड़ दिया, नहीं देंगे, लेकिन उससे बाहर कोई ऐसी रूल नहीं है कि आपको बिल्कुल ही ट्रेड में पैसे ना दें। तो I haven't seen a company that would completely will vanish away and say कि अब जिस तरह है जतिन भाई हैं, एवरेज 5,000 कर रहे हैं एक प्रॉफिट से, कुछ लोग पर्डिया कर रहे हैं, कुछ एपेक्स है। अब you know, so nobody that I know in our organization, maybe 2 or 3% are putting their own money, remaining are saying यार मैं अपने पैसे क्यों लगाऊं, मुझे पैसे अब आप अचीव हो गया ना ये गोल 20,000 का, पीछे लिखा था। आप कहते हो यार मैंने एनवीडिया खरीदना है 18,000 का, और आपके पास 18,000 नहीं है, तो 6-7 महीने में आप टेक प्रॉफिट से ले सकते हो यार, पर्डिया से ले सकते हो, प्रॉप शॉप से ले सकते हो, एपेक्स से ले सकते हो, लेजेंड से ले सकते हो। इतनी कंपनियां हैं जो आपको हायर करेंगी। मुश्किल काम बता दूं आपको, आप रुकने वाले नहीं हो, ये मुश्किल काम है। ठीक है, ट्रेड ऊपर नीचे हो जाता है, स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग हमारे पास जो भी बैठे हैं नहीं रुक रहे। हैप्पी ने मुझे फ्राइडे की रिपोर्ट दी है, एक
भाई यहाँ इधर सामने बैठते हैं, $410 बने हुए हैं 2 अकाउंटों पे, दो अकाउंट थे, एक है, $410 लेने हैं, नहीं रुक रहे, नहीं अब वो अकाउंट उड़ गया था जी मंसूर भाई। सो अब कोई क्वेश्चन हो प्रॉप फर्म का हो किस क्वेश्चन होगा तो हम कॉन्वर्सेशन आगे जाओ मंसूर। अब वो मंसूर भाई हैं हमारे, उनको रोकना पड़ता है क्योंकि मैसेजेस ऐसे आते हैं 3000 टन 4000। मैं कहा मंसूर भाई रुक जाओ, हमें भी कुछ वहां से लूटने दो, अकेले ही लेट रहा, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं इतना पैसा टेक प्रॉफिट से लूट लिया कि उन्होंने पे आउट स्लो कर दिए। तो मैंने कहा यार कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें उसके अंदर। सब हेलो जी, यस यस Take profit company. हाँ जी, There is a negative thing also. Say if somebody loses $100 and then makes $200. नहीं नहीं वो तो इस तरह चलता है ना। देखें आपने पहले बनाए $100, चले पहले ही लूज करवा दिया ना आपको 100, आपका स्टॉप लॉस 200 पे हिट हो गया, ठीक है। अब आपके पास 200 माइनस हो गए, 1300 रह गए, लेकिन 1700 बनाने, यही हुआ ना। फिर आपने 200 में से 100 वापस कर दिया, ले लिया, ये वापस चला गया थ्रेशोल्ड, फिर 100 ले लिया और या 50 ले लिए तो फिर वापस चले गए। तो फिर वो बैलेंस चलता रहता है। वो ट्रेडोवेट के साथ खोल लें वेबसाइट, उसको देखते रहें कि मेरे पास अवेलेबल ड्रॉ डाउन कितना है और मेरे पास जो है। सो एसेंस इज एंड ऑफ द डे यार, हम आपको ना मैजिकल पिल नहीं दे रहे। मैं दोबारा उस फोटो पे जाता हूं कि ये ना मैजिकल पिल नहीं किसी ने मुझे खिलाई कि 108 किलो से 92 किलो का सफर है, 108 to 92 right now. It just happened because I started parking my car a little farther and I took, जहां एस्केलेटर थी वहां वो कर दिया, स्टेयर्स ले ली। जहां कार 2000 खा रहा था वहां 1800 कर दिए। 1 साल लगा है, 3 साल लगे हैं, फिर जाके ये हुआ। ये नहीं होगा कि आप ट्रेडर सुबह आएंगे, हम कोई स्विच आपके अंदर डालेंगे और आप सुबह पैशन ट्रेडर बन जाओगे। अप एंड डाउन बैटल है, थोड़ी थोड़ी करते करते एंड में बड़े से बड़ा, तेज से तेज खराब हो जाता है। मार्च अच्छा है, जून अच्छा है, अभी है कि क्या करना है। 8500 बन गया है, 15 नवंबर हो गया है, पे आउट आ गया जी, अप्रूवल हो गया या 370। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज वन एग्जांपल। मंसूर भाई $67,000 फास्ट ट्रैक ट्रेडिंग से लेने वाले थे, एक लेट हुए, पैसे आ रहे थे। मेरे आपको कुछ मिले थे पहली दफा, हमें सारों को, किसी को मिला था फास्ट ट्रैक से हमारे ग्रुप में? हाँ आप ही ने लेने हैं, हम और किसने लेने हैं? तो भाई ने ना जाके घर बुक करा दिया। मैं पूरा स्टोरी बता, मैं क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं सर, 67,000 आपकी डाउन पेमेंट है यार, विद छोटी रकम थोड़ी है। यूएस बड़े से बड़ा बंदा ठीक खराब हो जाता। घर बुक कराया, लाओ जी स्कॉट साहब आ रहे हैं टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, अभी मिल रहे हैं पैसे, अभी नहीं मिल रहे, हम एकदम मिल रहे हैं नहीं, हम हमारी पल्स भी ना। हालांकि अपने पैसे कितने लगे हुए, $1000 अकाउंट्स खरीदे ना, 1000-1200 के अकाउंट हैं, लेकिन वो बैलेंस बिल्ड होते होते मेरा भी अप्रूवल लिखा हुआ है, हम लोग खुश हो रहे हैं, यार चीजें प्लान हो रही हैं। घर बुक कराए और कंपनी डिक्लेयर्ड फॉर बैंक्रप्सी 1 वीक इनटू इट। हमारा क्या नुकसान हुआ, 1000-1200 का, ऑलमोस्ट ट्रेडिंग छोड़ गए थे, ऑलमोस्ट। कहते हैं यार दिस इज मेस्ड अप, लाइक आई मीन इतनी हमने मेहनत की, 3 माह में इतना बैलेंस इकट्ठा किया, फाइनली ये ऑलमोस्ट 6-8 महीने के बाद टेक प्रॉफिट से जो आने शुरू हुए हैं ना, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहाल हो गया कि यार इट्स द कंपनी डज पे, राइट। सो पर्डिया भी पे करती है, कुछ लोग मेंबर पीछे बैठे हैं, एपेक्स ने तो ब्लॉक कर दिया, तो कहते हैं भाई मंसूर भाई को ब्लॉक किया हुआ है कि you're taking too many payouts out of it, right? So it's okay. I know it looks good on paper, but it
They have a cap. Most company will pay you $250,000 approximately, and then they will say, I think it's enough, right? No, it's just different rules, right? So here I show take profit. I right now the fastest company to go under would be take profit because सबसे आसान है. आपने अकाउंट लिया, 5 दिन में अकाउंट पास किया, 6ठे दिन में ट्रेड किया और शाम को पैसे ले लिए. आसान है ना. जितनी मुश्किल कंपनी होगी उतनी लंबा चलेगा. पर्डिया कैपिटल इतना तेजी से नहीं. Bullnox is still difficult, meaning it requires you to trade at worst 10-11 days. I mean, एक ये का भी है ना, एक ये और 10-11 दिन बुलनॉक्स के हैं, लेजेंड के 10 दिन है, एपेक्स के एटलीस्ट 9 दिन है, एक डाल के, ठीक है, 9 days हैं. अब टेक प्रॉफिट 6 दिनों, ठीक है. ये सारी कंपनीज लड़ रही हैं. मुझे ईमेल आती है लोगों की सिर्फ कि हमारा बैनर जो है ना सुपर एरियाज में ऊपर कर दो. Because what happens is, remember, everybody is getting accounts, right? Some people are blowing 5 accounts, 8 accounts. ये कंपनी यूएई की है, ये फंडेड नेक्स्ट. अभी आई है लूसिड ट्रेडिंग. 2026-27 में ये गंद इतना मर जाना है कि जो ट्रेडर है ना वो सिर्फ अब हम सारों ने लूसिड पे जंप इन कर रहे हैं. वाई? नई कंपनी है ना, रूल आसान है, लिक्विडिटी उनके पास है, तो क्यों ना जाके इनको पहले छोड़ लें, इससे पहले कि पूरी दुनिया जंप इन कर जाए. और ये चार्ज बहुत ज्यादा करते कितने कर रहे हैं जी? बहुत ज्यादा पर ट्रेड पर कमीशन ज्यादा है. अच्छा, कमीशन ज्यादा. लेकिन देखें अब, अच्छा जो गोल है ना अब हम सारों का, वो इस कंपनी के पास जाना है. ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एफटीएमओ. इससे बड़ी कंपनी नहीं है कोई, और दे हैव बीन अराउंड फॉर 2 decades. ये आपको हायर भी कर लेते हैं, और लेकिन इनके चैलेंजेस मुश्किल हैं. जितना मुश्किल टेस्ट होगा उतना ज्यादा कंपनी लॉन्ग टर्म चलेगी. तो लेट्स सी. टेक प्रॉफिट आज नहीं है तो लूसिड है, कोई बात नहीं. पहले हमने 2 साल एपेक्स को उन्होंने रूल जरा टाइट कर दिए हैं, तो हम बुलनॉक्स में चले गए. बुलनॉक्स से निकलेंगे तो लेजेंड में चले जाएंगे. So there are lots of companies. Idea is learn to trade first. देखिए कंपनीज तो मैं आपको 1000 दे दूंगा, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आपको कंपनियों का चार्ट डालना है यार. It's okay. So एज ऑफ नाउ टेक प्रॉफिट सही जा रही. मैंने इनके नहीं करना होता है, इनका पीए को पे करना हाँ. भी ये महंगी पड़ जाती है. तो ऐसा ना देखिए, एक दफा ये प्रॉप फर्म्स का आइडिया ये है कि आपको लेस पैसों में ट्रेडिंग आ जाए, ठीक है. एक दफा आप सीख गए ना तो आप अपने पैसे भी इसी तरह मैनेज करेंगे. अब इमेजिन करें कि आपके 1500 मैं कह दूं, आज आपको सिखा दूं. मैंने जब ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी ना 2021 में, मैं कोई इतना हैप्पी नहीं था. पता क्यों? क्योंकि मुझे, हैप्पी को, सारों को हमने जब विन लाइफ टाइम ज्वाइन किया अपने पैसे डालने थे. ये फंडेड कुछ नहीं होता था, ठीक है. हमने 8 लड़कों ने ज्वाइन किया. हमने $3,000 जमा कराए रियल ब्रोकर में. जब आप पहला ट्रेड लेते हो ना, बड़े आप, क्योंकि हम लोग स्टॉक से आ रहे हैं, ऑप्शन से आ रहे हैं, आपके रियल पैसे हैं, आपके पास नैस्डैक है. अगर हौसला नहीं है ना तो आप नहीं कर पाओगे. हौसला चाहिए ना. मुझे पहली कॉल याद है, मैं इसराइल में था, हैप्पी की मुझे कॉल आई, कहता यार ट्रेड गलत लग गया है, निंजा 7 क्रैश हो गया है, हमारा 2900 का रियल अकाउंट ड्रेन हो गया, क्योंकि मार्केट मूव्ड, निंजा 7 था, बग आया, पता नहीं क्लोज नहीं हुआ. मैं कहा भाई बात यह है कि अगर इसको करना है तो सीखना तो पड़ना है कि करना क्या है, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेडिंग इस तरह चलती है, या पैसे खत्म हो जाते हैं या टाइम खत्म हो जाता है. ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग है. सिंपल. आपके पास कितने पैसे हैं अकाउंट में, पहले वो जाएंगे, या आपके पास अकाउंट में टाइम कितना है. टाइम कितना होता है? 23 घंटे. आपने ट्रेड डाला है सुबह 9 बजे, आपके पास शाम 5 बजे का टाइम है, उसको बंद करना है. प्रॉफिट में या लॉस में? आपके पास अकाउंट में $1,00,000 है, वो जब तक जीरो नहीं होगा या जब तक शाम के 5 नहीं बजेंगे आपका ट्रेड चलता रहेगा.
इसमें ये नहीं होता स्टॉक्स की तरह कि आपने डाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने 1500 अपने डाले और वो जाया हो गए तो आप 5 गालियां देंगे। हमें एक गाली और बढ़ा दी। पहली गाली उसको देंगे जिसने आपको इधर भेजा, यार ये वाण। दूसरी देंगे आप मुझे, तीसरी देंगे इस इंडस्ट्री को, और चौथी देंगे इस सॉफ्टवेयर को, राइट। अपने आप को कोई नहीं देगा, मुझे मालूम है कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स सारा कसूर तो हमारा है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यार, अब हमारे पास फिर जो प्राइम प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू गो to the next level starting December. We have contract, we are working with the firm in United States. We are taking this to probably 100,000 users next month. What is this product? What is this? And I'll tell you कि हमारा अगला game plan क्या है. We have a marketing plan. This is for advanced trading. This is basic कि आपने $50 कमा लिए, 40 कमा लिए. These are called levels. And you probably have seen it. These are called support and resistance levels. So our company every single day predicts. आपने मेरे साथ ट्रेड किया था 650 वाला और 250 वाला और 160 वाला, आप तो रेडी हो गए सर जी। हमारी कंपनी आपको ये वाला भी सिखा देती है सिस्टम। ये है ना एक सिस्टम बिगिनर्स के लिए, आपको नहीं पता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आपको इसमें से गुजरना पड़ेगा। लेकिन 6 माह, 8 माह बाद, साल बाद आपको ये नंबर समझ आ जाए ना, ये वाले नंबर लिखे आते हैं एवरी, आपको मिलेंगे, सारों को मिलेंगे। ऐसा नहीं है जिसको ट्रायल में नहीं मिलते। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट की आज की डायरेक्शन क्या हो सकती है। ये है थोड़ा सा एडवांस लेवल, जिनके अकाउंट बड़े हो जाते हैं ना, लाख लाख, 2-2 लाख डॉलर के, वो ये नंबर यूज करते हैं। ये एक कंपनी है बाय द वे, एक इंडेक्स है, NASDAQ। गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, फॉरेक्स की 3 है, 6B, 6C, 6E। क्रिप्टो के बिटकॉइन और एथेरियम है। हमारी कंपनी उन ट्रेडर्स को केटर भी करती है जो लेवल्स पे खेलते हैं। वो नहीं चाहते यार मैं ट्रेड में जाऊं वापस आ जाऊं, ट्रेड में जाऊं। कई दफा आपको ट्रेड 22-22 घंटे चलाना पड़ता है। हमारे सामने एक ट्रेडर बैठा है 650 से, पता कहां जाके निकला, 25,000 पे। बल्कि गाली वो कह रहा था कि यार तूने मुझे निकाल दिया, मैंने 25,250। एक सिंगल ट्रेड $3300 का, $3500 का, $4000 का। ये फिर आपको जरा, ये है पोजीशन ट्रेडिंग में आ जाता है काम। ये वाले जो नंबर्स है ना, इनकी एक्यूरेसी है 90%, कि हम लोग करते आ रहे हैं 2008 से। तो जब आपको एक नंबर दिया है, बल्कि ES का नंबर मैंने 70 बोला था, मैंने कहा 70 आएगा तो सारे ही लॉन्ग कर देंगे। पर तो where is the ES number? Let me double check. Sorry guys, we'll be done in half an hour or 15 minutes. Friday, yes. देखें जी, ये है फ्राइडे के नंबर, 14 नवंबर। हमारी कंपनी का एक चैलेंज है। देखिए, आपने अगर टेस्ट करना हो ना किसी को कि यार राफे की कंपनी, माजिद भाई, ट्यूलिप, जतन, सारे कंपनी का ऐसा 30 मेंबर हैं जो चलाते हैं, एक नहीं है। ये नहीं है कि राफे भाई नहीं है तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। राफे भाई नहीं है, विक्रम भाई बैठे हैं, विक्रम भाई नहीं है, ट्यूलिप बैठी है, ट्यूलिप नहीं है, मुर्ताज बैठा है, मुर्ताज नहीं है, जतन से पूछ ले। एक बंदा नहीं है जो मास्टर है। हमारी कंपनी ने हमारा एक चैलेंज है, सुबह 9 बजे हम आपको जो नंबर देंगे ना, हम 24 घंटे चेंज नहीं करेंगे। देखिए, बड़े गट्स चाहिए होते हैं कुछ प्रिडिक्ट करने के लिए। यानी कि एक होता है ना कि यार मैंने अब कुछ कहना है, तो हमारी प्रेडिक्शन 90% ठीक है। 70 से ऊपर आप प्रॉफिटेबल होते हैं बाय द वे। 70 हो ना तो आप प्रॉफिट। अब हमारी कंपनी ने क्या प्रेडिक्ट किया, ये वाली प्रेडिक्शन हर बंदे के फोन पे आई है फ्राइडे को। कब? फ्राइडे को आई बिलीव सुबह अलर्ट्स में आ गए थे। तो हर एक को कहा कि भाई जाके अपना सिस्टम चेक कर लो, अब मार्केट गिर रही है।
गिर रही है, गिर रही है। अभिषेक देखिए, मैं इसका आसान तरीका बता दूं। मैथ है ना, सारा इंजीनियरिंग है। ये वेदर ऐप है, हर एक के फोन पे ये वेदर ऐप चल रही है ना, हर बंदा इस पे चलता है, ब्लाइंडली चलता है ना। अब आप वेदर उठाते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को कंप्यूटर कह रहा है कि 5 डिग्री होगा। यार आप इसको ट्रस्ट कर लेते हो, हमारे लेवल नहीं करते। ये किसने बनाया? ये एप्पल ने बनाया ना। कहां से बनाया? हिस्टोरिकल डेटा से, कि अगले नवंबर में ये सीजन होता है, नवंबर में विंड प्रेशर ये होता है, ह्यूमिडिटी ये होती है, रेन का टेम्परेचर ये होता है। तो मॉडलिंग एल्गोरिदम से दुनिया चलती है। हमारा सॉफ्टवेयर भी एक एल्गोरिदम है, वो पल्स देखता रहता है, बैठा हुआ बैठा बैठा कि यार अच्छा, ये नहीं होता कि उसने कहना है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये नहीं होता। अगर आप वेदर ऐप खोलेंगे ना, वो आपको एक रेंज देगा कि यार हाई इतना हो सकता है तो लो इतना भी हो सकता है, ठीक है। हमारा सॉफ्टवेयर भी एक आपको रेंज देता है कि अगर प्राइस ऊपर गई ना गोल्ड की आज, तो यार कितनी ऊपर जा सकती है। एक लिमिट है ना, एक सीलिंग है। यहां गोल्ड की प्राइस यहां है, यहां जाएगी। अगर गिरेगी तो कहीं जीरो तो नहीं हो जाएगी ना, कहीं रुकना है उसने। अब फ्राइडे को ये नंबर देखिएगा, 4050। सर कई दफा फिर होता है कि जो कनेक्टेड है ना हम जिनके साथ, और जिस लेवल से कंपनी से आ रहे हैं, हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एग्जैक्टली 40-50 से ना गोल्ड 72 पे चला गया था, और $1 पे 100 मिलता है। तो आप एंटर करें, अपना स्टॉप लॉस लगाएं, टीपी लगाएं और भूल जाएं। तो दोज पीपल ये आपने इवेंचुअली यहां पहुंचना है। आप पूरी दुनिया में, मैं ताहिर भाई की हमेशा एग्जांपल देता हूं, कोलंबिया में बैठे हैं, ठीक है। ये देखें जी, ताहिर भाई क्या कहते हैं, ये उनके लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स हैं। ये कोई मजाक नहीं है कि लाइव अकाउंट पे बंदा करता है। $2300 लाइव लिया उसने। कोई ये नहीं है मैं फंडेड करूंगा, ये करूंगा। और क्या है, टेक प्रॉफिट के प्रो अकाउंट में भी मैंने याद करो 300 बना लिए, राइट। और ये कहां बैठे हैं जी? डन फॉर द डे, हेडिंग फॉर द बीच, राइट, लाइक सो। बट ही इज बीन ट्रेडिंग फॉर विद अस 10 years। ये आज का नहीं है। आपको एक दफा सिस्टम समझ आ जाए। तो अब हमारे पास कुछ हैं इस लेवल पे चले गई हैं कि कह रही हैं जॉब छोड़ दें। मैंने कहा यार आप डेंटल बेनिफिट्स को नो कह रही हैं, आपकी जॉब पे डेंटल, जॉब पे सिर्फ जाया करें फन के लिए। लोग जॉब पे जाते हैं इनकम के लिए। हम लोग इनको कहता हूँ यार 300 है ना आण दो यार, 400 केस ही है ना, नाल टेढ़ पाए आना ना 300 ले आना। तो जॉब पे जाना चाहिए फन के लिए, ना स्ट्रेसफुल के लिए, राइट। अगेन ये पॉजिटिव स्टोरीज है, नेगेटिव भी हैं। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, 400 के बाद नहीं उठ रहे हैं, मैं क्या करूं? ठीक है बैठे रहो। मैं तो आपको मुबारक देता हूं, अकाउंट जाता है ना, है स्ट्रगल किया जी। और जे भाई से पूछे, मैं पहले तो हैप्पी के हाथ चढ़ गए जी, लगे। सो मैं कहा यार कई दफा हमें ना मुश्किल होता है कि पता नहीं बंदा सीख पाएगा कि नहीं, राइट, क्योंकि लाइक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ। सो एनीवे, अब आपके कोई क्वेश्चन हो दोबारा तो ये इवेंचुअली है जी, 1 साल बाद आप पूरी दुनिया में कहीं बैठे होंगे ना, तो हम आपको एक अलर्ट भेजते हैं एवरी डे, डे 1 से शुरू हो जाता है। आपने फोन खोलना है, अपनी ऐप खोलनी है। जतिन भाई फोन पे करते हैं, जय भाई फोन पे करते हैं, मंसूर भाई फोन पे करते हैं। एक सीख कि जी eventually I now have enough experience to be able to trade with my phone. These are levels of alerts. क्या चल रहा है? So our computer predicted, hey, if the price goes to 72, go long. मैंने कहा जी 70 पे आई, लॉन्ग किया, डन, लाइक 200, 300, $400 डन करके। सिर्फ ट्रेड बाय ट्रेड उसको देख लें, टेस्ट कर लें। और हमेशा मेरा ओपन चैलेंज है भाई, ना बिलीव करें हम पे। एक माह है, उन ट्रेडर्स के साथ बैठ लें जो जो ये काम सुबह दोपहर शाम कर रहे हैं। एक स्ट्रेटजी पिक कर लें। अब इनको he says I don't care about any charts, देखिए ना, इन्होंने एक वो रूट पकड़ा
एक मार्केट पकड़ी, नैस्डैक पकड़ी, 15 मार्केट्स हैं। वो कहते हैं यार, हैप्पी के पास गए कि यार मुझे सिर्फ तुम नैस्डैक सिखा दो, मैंने कोई गोल्ड नहीं करना, कोई ES नहीं करना, कोई नेचुरल गैस नहीं करनी, कोई, मैंने एक मार्केट सीखनी है। बिकॉज रिमेंबर एवरी मार्केट ओन pulse, like movement. ES works with ES and NASDAQ are US indices. They work differently. Gold has a mind of its own. Gold is called gold, God's currency, GC, because it's global. Crude oil works with APEC, like those guys who are doing the oil. Then you have Russell. Then you have Forex, natural gas. Winter में माजिद भाई ने कॉल की थी, क्रूड ऑयल ले लो, जब वो गिरी थी, सारे बैठे थे, कहते हैं यार जितने लाइव सुन रहे हैं क्रूड ऑयल खरीद लें। क्रूड ऑयल ने $4 दिए हैं 3 दिनों में, और $3 दिए हैं 3 दिनों में, और $1 $1000 का होता है। तो हमारे पास $10 के अकाउंट से लेकर 10 मिलियन वाला है। Different people take care of it. Just telling you. If you have a $250,000 account, I'm not your guy. आपको डैनियल से मिलना है, आपको वो बताएंगे। If you are dealing with at least like अगर आपने नैस्डैक करनी है, आपने हैप्पी से मिलना है, आपने ES करनी है, मुर्ताज से मिलना है, आप फीमेल हो और सिर्फ कंफर्टेबल हो फीमेल मेंटर्स के साथ, मिस ट्यूलिप, मिस रमनीक के साथ चले जाए, राइट। उसके बाद we have a thing for everybody. So just don't switch too many mentors, don't switch too many markets, don't start, pick something, we'll get you started with S&P 500. One market, slowly. चलें आज टेक्निकल लेक्चर भी दे देते हैं, टेक्निकल है ना, ठीक है। सॉरी, those who were sitting at Majid Bhai, my sir, came up with a strategy. Because my brother who came from Holland, he's struggling. He works for UPS, and he said, I want to get into trading. कभी वो NASDAQ में जा रहे हैं, कभी गोल्ड में जा रहे हैं, कभी FTMO। मैंने कहा माजिद भाई इनके साथ बिठाएं और बताएं कि करना क्या है। So Majid भाई came up with one. He deleted every chart. सारे चार्ट डिलीट कर दिए, 240, 60, 30, 2 चीजें खोल के रखी, 15-10 और 30-20, सब पूरे सिस्टम पे जी। वो कहते हैं कि क्योंकि वो ओवरवेलमिंग था ना, कह रहे यार मैं इतना नहीं सीख सकता, तो उन्होंने एक चीज निकाली। तो हमने इसको कहना शुरू किया उसमें माजिद भाई की स्ट्रैटेजी। वो उन्होंने मेरे भाई को कहा ये चार्ट देखो और ये देखो, छोड़ दो हजारों काम, ये ग्रीन हुआ है ना, ये ग्रीन हुआ तो पहले ग्रीन ये हो जाएगा ना। सारे मेरे साथ हैं जो लोग, जैसे ये ग्रीन हो इसकी यहां पर जाके बैठ जाए, आपकी प्राइस यहाँ चल रही होगी, जब वो पहला पुल बैक आएगा ना वहां से बाय कर लें। दैट्स इट, फर्स्ट पुल बैक, फर्स्ट मिड बैंड, पहला मिड बैंड लेना है सर, पहला। सारी चीजें छोड़ दें, मुर्ताज बैठा है ना पीछे, 15 चीजें करवाता है, मैं इसका मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। फिर कहता हूँ यार हम लोग 3 करवाते हैं, लेकिन उसकी अब वो जॉब ही उस नौयत की ना कि उसने करवाने हैं $1 वाले ट्रेड। तो अब ये ट्रेड है, किधर गया जी मेंटर हमारे, मेंटल को भी आप सारों ने मेंटल ही कर दिया, इसने कैसा, इट्स ओके, नो वरीज। कई दफा की लाइव स्ट्रीम सुना रहा तो CNBC वाले कह रहे होते हैं कि हमने स्टूडियो जला देना, क्योंकि वो नैस्डैक को अपनी गर्लफ्रेंड बुलाता है। तो लेकिन वो यार करोड़ों डॉलर की मार्केट चल रही है और वो कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी आएगी मेरे पास, देखना। तो उल्टा ही काम है। एनीवे, फर्स्ट पुल बैक, मार्केट ओपन्स 3.150, आप ES करें, हम MES करें, ये वाली स्ट्रैटेजी अब हम ना बिगिनर्स को देना शुरू कर दी। 30-20 ग्रीन होगा है, नहीं नैस्डैक में नहीं कुछ सर, नहीं बात, सारी दुनिया अलग, हैप्पी अलग, क्योंकि वो नैस्डैक अलग, क्योंकि उसका उतनी वॉलेटिलिटी बहुत है ना। तो आपको अगर नैस्डैक करनी है ना, ये ES की,
ES में भी चलती है, गोल्ड में भी चलती है, क्रूड ऑयल में भी चलती है, फॉरेक्स में भी चलती है। तो ये स्ट्रैटेजी 70 से 80% आपको चला रही है। अब इन्होंने कहा मैंने SRES भी, क्योंकि सारों को हर चीज पता है। अब इन्होंने ब्लैक कैंडल ली, $50 मिड बैंड लिया, डे क्लोज इन 450. So they have a moral obligation, not a legal, not a financial obligation, when you are sitting in front of it. And all mentors are asked by our CEO, please don't explain why. Again, आपने ये नंबर क्यों लिया? आपने हैप्पी भी नहीं कहता, हैप्पी भी कहेगा भाई करना है करो, क्योंकि हमारे पास उस टाइम में ना आपको आंसर करने का टाइम नहीं होता। हमें होता है कि हमने आपको बस ये ट्रेड करवाना है, अगर आपने करना है, साथ पकड़ना है। तो अगर आपको हाई डोपामिन चाहिए तो आप हैप्पी के साथ चले जाओ। नैस्डैक सबसे आगे चलती है, सबसे आगे नैस्डैक। जिसको जरा थोड़ी स्लो मार्केट चाहिए वो ES कर ले। तो जिस तरह मिस ट्यूलिप है, फर्स्ट पुल बैक करवाया, MNQ पे करवाए 25 पॉइंट, MNQ पे करवाए 10 पॉइंट। So end of the day, it's not that difficult if you can understand it. So essence of this presentation is you can all do it. 97 of you will fail. That's just a statistic. नहीं, लेकिन उस 3 के अंदर भी ना स्टैट्स है मेरे पास। उस 3 के अंदर में भी 1% ऐसा है जो दे रहा है ले रहा है। आज दे दिए, कल ले लिए, परसों दे दिए, फिर दे दिए। सिर्फ 2% ऐसे हैं जो एक कंसिस्टेंसी फ्लैग के साथ चल रहे हैं, कमा रहे हैं। ठीक है, हमने उस दिन मैंने प्रॉप शॉप पे लॉस लिया, इन्होंने 750 का लिया, नहीं आ रही थी मार्केट, बंद कर दिया ट्रेड के, यार नहीं करना पड़ा है। मिस ट्यूलिप को बैठी है, उन्होंने कल नैस्डैक में, हाँ इट्स ओके उन्होंने नैस्डैक पे लॉस लिया, वो गलत से 830 के रेजिस्टेंस पे एंटर हो गई। मैंने कहा बंद करो यार इसको, कितना 200-300 को बंद कर दो इससे पहले कि अकाउंट चला जाए, राइट? सो there is no, I'm not 100%, none of my mentors are 100%, but we try to be within 70 to 90% accurate most of the time, right? So and how do you become a mentor? आपको ट्रेड करवाना आ जाए, हम आपको मेंटर बना देंगे। वो लड़का अगेन मुर्ताज आया, बैठा, रोज के 100 बनाता है, चला जाता है। पहला पे आउट एपेक्स से लिया, मैंने कहा भाई साहब आ जाओ, लोगों को सिखा लो। मिस ट्यूलिप है, विन लाइफ टाइम में ज्वाइन किया है, रमनीत है, मिन लाइफ टाइम में ज्वाइन किया, कंसिस्टेंसी से पे आउट आ गए। मैंने कहा यार 4 के सामने बैठो, ट्रेड करवाते रहो, राइट? सो इट्स नॉट ए। और कोई क्वेश्चन है? जो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, टाइमिंग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपकी क्लास? देखें इसका आपका फिर जो ना जो प्रोग्राम बनाया जाएगा ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्रोग्राम इस तरह है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ मेंटर्स है ना, तुसी पीछे किधर आ जाओ एक। सो अगेन आफ्टर दिस सेमिनार आई हैव, बाय द वे, हु कैन यू टॉक टू आफ्टर आई एम डन माय लेक्चर हियर? Jatin Bhai, mentor. Miss Tulip, mentor. Murtaz, mentor. Mansoor, mentor. Happy, mentor. So we have lots of guys you can, यार दिखा यार, खोल के दिखा दिंदा यार कि मैं अपने वाइस तो किन्ने ले रहे हैं। तो they're not scripted guys to sit in here to show you the plans, right? And the idea is that yeah, it's okay. So idea is, to be honest, it's eventually there will become a number कि 2 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 1000 लिए, it's okay. असल में वो फिर ना फीलिंग खत्म हो जाती है, इम्यून हो जाता है ना, क्योंकि वो एक डिजिट और लग गया, आ गया, ठीक है यार, कल फिर बैठ जाएंगे, कल बैठेंगे, ट्रेड करेंगे, अकाउंट बना लेंगे, that's it. Now you come up with a way to figure out how this is a great business to give you lots of income, but it can really, on the other side, can, and these companies will pay you, honest to God. So आपका जो question to answer, primary, all the mentors are doing 8 to 11 job. ठीक है? You have to start practicing the study on your own time in the evening. Market is open 6 p.m. Go open it up, trade gold, trade NASDAQ, trade crude oil. Maybe a little bit evening, pick this session 2 to 5.
because I want you to be able to understand, and the finally will put you into this way. Because those people who cannot sit in front of a computer 8 to 11, 9:30 to 11 this time, they go and trade with this method. These are called support and resistance. फोन पे अलर्ट आ जाता है, आपको पता लग जाता है कि क्या करना है मैंने, ठीक है। आपको एक प्राइस बता दी जाएगी, इस प्राइस पे मैंने बाय करना है या सेल करना है, तो आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, टीपी लगाएंगे। तो ये 24 घंटे चल रही है। रात के 11 बजे अलर्ट आ जाएगा कि मार्केट ने आपके टाइम पे नहीं चलना, मार्केट ने अपने टाइम पे चलना है। और आप इसको, अब वो हमारे ग्रुप में बेटा मेरा शाम के 1 बजे लगा हुआ था, रात के 1 बजे डन हो गया कि जी मार्केट आई है, हिट हुई है इस नंबर पे। So market is not going to move at your time. It's just going to move on its own, and you just decide to say, so if for you, for those that are working full time and cannot do this, they have to learn how to do areas. Because this area, honestly, all of us do it from the phone. हमने ट्रेडोवेट की ऐप खोली हुई है या लाइव की ऐप खोली हुई है, and this app is available on your phone. You tells you, hey, I would like to place an order. Because for this, you don't need any system. That's a different, this is one method where you can trade globally, anywhere. Yes. So what if we just buy a $90 account? So will you help us to just tell us कहाँ पे इसको buy or trade करना है? देखिए, मैं आपको पहले तो आपको मैं विगरस ट्रेनिंग में से गुजारूंगा। इसकी एक रीजन है, आपने 90 का आज अकाउंट ले लिया, कल फेल कर देंगे, आपको नहीं पता लगेगा, राइट। मैं ये कह रहा हूं, पहले अपने शाम के टाइम पे वीडियोस तो देख लें, ठीक है। क्योंकि डैनियल भाई की ब्रीफ सुबह इस तरह आनी है, जब आप शामिल हो जाएंगे ना। ES is in a 60-minute diversion, NASDAQ is hitting 240 out chart, you're overbought, आपके सर के ऊपर से गुजर गया, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि उन्होंने कहा क्या है, लैंग्वेज है ना। अगर आपने सिर्फ, आपका गोल ये है कि पैसे कमा, टर्न टू योर बैक, टेक ए सेशन विद हैप्पी, एक्सप्रेस राउट टू हेवन, बात ही छोड़ दें। मैं बात, लेकिन $2500 लेता है वो, 8 साल चार्ट पढ़ के जो है ना दिमाग का दही बन गया है। क्योंकि वो देखें एक्सप्रेस राउट है ना, आप कहते हैं यार ये सारा मैंने नहीं सीखना, फ्री का है ना मेंबरशिप के अंदर। आप कहते हो यार हायर हाई क्या है, लोअर लो क्या है, मुझे सिर्फ ना सारी नॉइज निकाल दो। तो हैप्पी अपनी एक अपना उसने खोला हुआ है सिस्टम, हमारे साथ उसकी है एक एसोसिएशन, वो खुद करता है। वो कहता है आओ नैस्डैक वाले मेरी तरफ भेज दो, मैं सारी नॉइज निकाल दूंगा और सिर्फ आपको बताऊंगा यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना। तो एक्सप्रेस रूट भी है, लेकिन बिगिनर्स के लिए कई तरह, लेकिन अगर आपको सीख जाएंगे तो बेहतर है। आपको अगर मैं कहूँ या मुर्ताज पीछे बैठा कहे कि यार SRES का ट्रेड आ रहा है या ब्लैक कैंडल रिजेक्शन आ रही है, तो आपको कुछ ना कुछ तो पता, आपको यार मुझे नहीं पता क्या है। तो ये तो वही बात हो गई कि आपको, आप कहते हो यार मैं सारों को कहूँ यार वकील बन जाओ या रियल एस्टेट बन जाओ। उसमें से भी आपको मेरे ख्याल है आजकल 6 क्लासेस हैं रियल एस्टेट की, कमर्शियल लाइसेंस के बाद फिर कहीं जाके घर बेचना पड़ेगा आपको। हम टीका तो लगाना, हफ्जैर का टीका लगा दो, पता लगे कि अब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कहता मैं ट्रेडिंग सीख गया हूँ। हम दोनों बैठे थे, $90 का अकाउंट लिया, फौरन सामने इनके रूम में गया, क्योंकि मैं ट्रेडिंग आ गई। मैंने पहले ये पूछा, मेरी लाइव स्ट्रीम में जाएं, सब रिकॉर्ड है। इनका ट्रेडिंग आ गई है सर, आ गई है, बिल्कुल आ गई। ठीक है अभी आपका अकाउंट लेते, कहते मैंने लाइव खोलना है। मैंने ये नहीं, मैं इनकी तरफ देखूं, मैंने कहा यार नहीं लाइव नहीं खोलना। कहते मेरे पास पैसे हैं, पैसों की टेंशन नहीं है, लाइव खोलना है। मैं कहा नहीं, 90 का अकाउंट खुलवाया, इनके रूम में गए, 30 मिनट्स बाद वापस आ गए। वो कहते हैं अकाउंट मेरा चला गया। मैंने कहा यार इट्स बात हुई। अब वो जो जिनको पता है ES3 मिनी 1500 का अकाउंट, तो अच्छा हुआ उससे पहले 750 आधा घंटा
नहीं आधे घंटे बाद रेडी हो गए तो रिचार्ज करवाने के लिए तो क्या सो यू विल यू नो फिर आप कहेंगे यार अकाउंट नहीं चलते 3 मिनी ES में उन्होंने तबाह किए। अच्छा फिर दूसरा अकाउंट खरीदा, इनके पास गए 750 बना लिए। फिर इन्होंने कहा प्लीज लैपटॉप बंद कर दें, अब मंडे को आ जाएगा, इट्स ओके। तो हमारे पास ये भी एक कुछ कार्टून्स आ जाते हैं ऐसे, तो क्या करें। तो so I'll conclude it at now, and what time is it, like almost at 5 o'clock, 1 to 5। कोई final question मेरे लिए हो before I like you can mingle with these mentors, ask them questions। जी जी You can do with the phone. yes Multiple accounts. Can you copy them? 100% जी, बिल्कुल जी। आप में हमारे भाई वो 40 अकाउंट करते हैं फोन पे, 40 अकाउंट। अब आप ये ना पूछेगा कैसे, क्योंकि उन्होंने 2 साल लगाए हैं। देखिए बात ये देखिए एवरेज में 5 अकाउंट हो जाता है। एक ट्रेडर वेट की वेबसाइट है, ऐप है, उसमें 5 अकाउंट लिंक हो जाते हैं। हम सब 5 तो आप एक क्लिक करेंगे ना। अच्छा फाइनल अभी एक चीज तो रह गई, आपको ट्रेडिंग आ जाए, आपको कंसिस्टेंसी से रोज के $100 बनाने आ जाए। फहद भाई आप भी आए जो, आपको भी इंट्रोड्यूस करवा दें। ये है हमारे फहद भाई, पर्डिया से, एपेक्स से एनएफ चूस चुके हैं तो ये सामने बैठे होते हैं और इनकी वजह से हमें तंगी हो रही होती है। हम कहते हैं फहद यार बंद कर दे, क्योंकि अब आप आवाज आती है ओ 50 और ले लिए। ओ समय का फ्राइडे को हमने कमरे से निकाल दिया कि यार आज मैंने कहा तो अच्छा फहद भाई क्या करते हैं आप, कौन सी स्ट्रेटजी है? एरिया ट्रेड 30-20-15-10 ठीक है। So it's not really that difficult if you don't want it to be difficult, right? लेकिन at least language थोड़ी सी तो सीखनी है ना यार, कोई ऐसा नहीं है। तो एंड पे यही होगा। तो पैसे कहाँ मेगा बनने शुरू हो जाते हैं। अब कहते हो यार राहुल भाई 100 पे तो मुश्किल काम है, 100 के लिए नहीं है मजा आएगा। सब मजा उस वक्त आता है जब आप 5 टेक प्रॉफिट की अकाउंट इकट्ठे कर लेते हो। ग्रुप इसको कहते हैं ग्रुपिंग। अब मेरे पास 3 पर्डिया हैं, 5 टेक प्रॉफिट हैं, 3 बुलनॉक्स हैं, 20 एपेक्स हैं, 10 लेजेंड्स हैं, 5 ट्रेडिफाई हैं, 5 फंडेड नेक्स्ट हैं, 5 प्रॉप शॉप है ना। लूसिड पे भी हम ट्राई कर रहे हैं। देखें अब ऐसे नहीं होता कि सारे 40 इकट्ठे ट्रेड होंगे। आपने एक ट्रेड लिया $100 वाला, वो एक बैच को दे दिया कि यार मैंने इन बच्चों को खाना खिला दिया, ये फिल है। फिर गए पर्डिया की तरफ, अगला ट्रेड पर्डिया को दे दिया। फिर गए लूसिड की तरफ, एक ट्रेड उधर डाल दिया। अब एक अकाउंट में 100 बनाए, 500 बन गए। ये तो इतना मेहनत का काम है। अब ये भाई हैं बैठे हैं, लिंक किए हुए अकाउंट, सुबह आते हैं एक ट्रेड डालते हैं। अब एक एरिया है ना, आपको एक नंबर दिया यार 66-72 पे बाय करना है या 26-160 पे सेल करना है। आप एक पे करो या 1000 पे करो, रिजल्ट सेम आएगा, राइट? ऐसे रिजल्ट आता है, राइट? सो उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपना अकाउंट खोल लेते हैं सुबह और दैट्स इट। मुझे कहते हैं यार ES से कहो, मैंने कहा तुम NASDAQ से भी जाओगे, जो कर रहे हो ना वो करते रहो। तो उन्होंने मास्टर किया हुआ है और वो एरिया ट्रेड करते हैं, एक पे कॉपी करते हैं, 3 पे कॉपी हो जाता है। आप एक पर्डिया कर रहे हो अभी आप एक पर्डिया कर रहे हो, आप 5 बुलनॉक्स कर रही हैं, तो जे की तरफ ना ही देखूं तो बेहतर क्योंकि वो ना अपने पहले निचोड़ लेते हैं उस कंपनी से, फिर हमारी तरफ फेंक देते हैं ठीक है ये मैं ले चुका हूँ यहाँ से सारे तो ये आप लोगों के लिए छोड़ा है। सो एनीवे, सो थैंक यू वेरी मच एंड इट्स ओके। अगेन जस्ट लुक लेफ्ट, लुक राइट, एक बंदा आप में से रहेगा। आई नो आप कहते हो यार इतनी अच्छी बातें करने के बाद ये क्यों कह देते हो। रियलिटी प्रेजेंट कर दूं तो बेहतर होता है, क्योंकि अगर आप लोग लूज करोगे ना तो ये गारंटी हमारी वजह से नहीं है। आप लोग लूज करोगे मैं आपका मैसेज दिखाई देता हूँ ग्रीड वाला। वो जो वीडियोस है उसमें वो कहते हैं कि अपनी बुक पे लिख लो डिसिप्लिन जितनी बार लिख सकते हो लिख लो, दैट्स वेयर वी गेट हर्ट। ओके डिसिप्लिन नहीं करते। मंसूर भाई लिखते हैं ग्रीड ऑलमोस्ट किल्ड मी टुडे।
मैंने 2500 का प्रॉफिट बना लिया था और फिर मैं 3700 का लॉस लेके 300 रह गए थे और मैं वापस 3000 पे आया हूँ। ये मसले फिर आ जाते हैं आपको ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। तो है 25,000 वाले में 3000 बनाए हैं टेक प्रॉफिट प्रो में, हालांकि उस दिन 2500 कर लिए थे पहले ही ट्रेड में। प्रो प्लस, हाँ प्रो प्लस में लाइव प्रो में बनते हैं, प्रो में 10,000 बना लो। ओके प्रो प्लस यार, दो है ना, मतलब लाइव वाला। हाँ जी नहीं अभी वो प्रो प्लस में नहीं गए, पहले मिलता है वैल्यूएशन, मिलता है प्रो, ये प्रो में है। ये प्रो में प्रो प्लस नहीं है, प्रो है। प्रो प्लस तो उसके भी ऊपर चल जाता है। 9300 टेक प्रॉफिट से निकालना ना है। नहीं वो बड़े बड़े लॉटों से खेलते हैं, वो अब रूलेट से बहुत ऊपर चले गए। तो वो हाई रोलर होते हैं ना कैसीनो में, उनके लिए वीआईपी वो होस्टेस चल रही होती है आगे पीछे, वो उस रूम में जाके बैठते हैं। कहते हैं यार ये हमसे 200 वाले नहीं होते अब। ये 19 साल का 18 साल का लड़का है, बच्चा मेरा, इसको मैंने लेक्चर दिया भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है फॉर 18.5 year old को $10,000 कमाना in 1 week. This will mess them up for rest of the life. So every day we say you gotta, आप मुझसे एक ही जवाब देखोगे यार ग्रो स्लो, मैं कहता हूँ यही क्या लिखता रहता हूँ। So other day he said ये पर्डिया में आ गए अकाउंट, ये देखें प्रो अकाउंट है, $1700 कमा गया। अब प्रॉब्लम एक हो रहा है साइकोलॉजी का, इसके हैं 4 कजन, ठीक है, उनके अब्बू काम करते हैं नॉर्मल, एक का ग्रोसरी स्टोर है, एक रियल स्टेट है, एक अब जो मसले पड़ रहे हैं ये शो कर रहा है S580, यूनिवर्सिटी में जाना नहीं और 10,000 का पे आउट। उनके अब्बा जी कहते हैं कि की कर रहे हो, अड्डे मुंडे खराब हो रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, तो नहीं प्रॉब्लम ये है कि एक, अब मैंने कहा अगर वो चारों भी आ गए ना तो शायद 1-2 रहे, वो गैम्बलिंग में नहीं लाना चाहता ना कि यार आप ओवर ट्रेड कर जाते हो। तो आप मुझे मैसेज भेजोगे स्ट्रगलिंग में हूं, मैं आपको मोस्टली डांट दूंगा कि भाई इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग। सो रिजल्ट्स भी हैं, फेलियर रिजल्ट्स भी हैं, ऐसे नहीं है। मैंने आपको फेलियर भी देखेंगे, वो हैप्पी से पूछ लें, उनका नाम है, कसम खा के लिखवा के गए हैं कि अब 100 के बाद मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। अब मैं क्या करूं यार, क्या करूं 100 के। अब प्रॉब्लम ये है कि 100 बनाना बहुत आसान है, ये प्रॉब्लम है। 500 बना के दियो, अच्छा तोड़ के दियो 500 ना 100 2 मिनट टूटती है थे। नहीं, क्योंकि होता पता क्या है, आप हैप्पी के साथ बैठे, एक नैस्डैक का ट्रेड आया है ना, टीपी लगा हुआ है 5 पॉइंट का, एसएल लगा हुआ है 20 पॉइंट का, इसने आपको कहना है बाय, आपने बाय किया और वहां बन गए 100, 3 अकाउंट थे, हर अकाउंट पे 300 बन गए, ठीक है। अब आपके अंदर एक कीड़ा है और उस कीड़े के अंदर एक कीड़ा है। तो वो आपको खुजली कर रहा है कि यार ये तो बड़ा आसान था। मैं ये कहता हूं कि जब आप लगेज दे के आते हैं, 5 घंटे उधर नीचे दे के आते हैं, $300 मिलता है ना, रियल फील होता है। ये पैसे ना रियल फील नहीं होते, फीलिंग नहीं आती ना। आपने क्लिक किया तो जिसने मुझे मैसेज किया था ना कि यार मैंने 5,000 बनाया, लगता है कि गलत है, मैंने कहा यार आप मेहनत से कर रहे हो, आप 10 भी कमाओगे, ये रियल नहीं लगता कि यार आपने नैस्डैक लिया, उस लेवल से लिया, टीपी लगाया, एसएल लगाया, 2,000 बन गए। अब ये कैसे कर रहे हैं आई डोंट नो। मंसूर भाई की अपनी स्ट्रैटेजीज है, मेरे ख्याल 3-3 एनक्यू से जाते हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं। मंसूर भाई को आप अकेले पकड़िएगा। तो anyway, so now I'm gonna leave you guys with these mentors. Thank you very much for coming in, for giving me opportunity to explain. Thank you very much. Thank you.